फाइन, वेरी गुड। तो इस बार हमारा टॉपिक क्या, किसी को टॉपिक पता है हमारा क्या टॉपिक है आज का? किसी को पता है? प्रोबिटी इन गवर्नेंस। वेरी गुड। ठीक है, तो इट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट कि सिलेबस तो पता होना चाहिए हमें। तो प्रोबिटी इन गवर्नेंस, वेरी गुड। देन उसके अंदर सब टॉपिक्स हैं हमारे कुछ कुछ, राइट। द फर्स्ट इज कंसेप्ट ऑफ पब्लिक सर्विस। पब्लिक सर्विस क्या होता है, राइट? ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड इट, फिर दोबारा से रिपीट कर लेंगे पीछे। सेकंड इज फिलोसॉफिकल, basis of governance and probity, right? Expecting कि one question यहाँ से वो एग्जामिनर पूछेगा, आपका एग्जाम में देगा क्वेश्चन, right? Now the next topic is information sharing and transparency in government, right? अगर आप देखेंगे कि तो इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड ट्रांसपेरेंसी की जो मैकेनिज्म है उन्होंने इनको मेंशन कर दिया है। फर्स्ट मैकेनिज्म इज आरटीआई एक्ट, राइट। सेकंड इज सिटीजन चार्टर। एक्चुअली ये इनिशिएटिव्स हैं, दे आर बेसिकली प्रमोटिंग द इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड ट्रांसपेरेंसी और ओपननेस, राइट। सिटीजन चार्टर, देन वर्क कल्चर, क्वालिटी ऑफ सर्विसेज, राइट। सर्विसेज और सर्विस डिलीवरी एक ही बात है, राइट। देन कम्स टू द यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, पब्लिक फंड। देन अगर ये सब चीजें हैं, हम इसलिए किस लिए कर रहे हैं? बिकॉज देयर इज ऑलरेडी करप्शन, बिकॉज द करप्शन फ्री गवर्नमेंट है, तो द करप्शन कैन नॉट बी पार्ट ऑफ अ गुड गवर्नेंस, राइट। प्रोबेटी का पार्ट नहीं हो सकता, राइट। सो प्रोबेटी में हम बात करते हैं अपहोल्डिंग द अपराइटनेस। जो भी इथिकल एंड मोरल प्रिंसिपल्स हैं उन्हें गवर्नमेंट स्फीयर में हमको क्या करते हैं? अपहोल्ड करते हैं। तो देयर इज नो स्पेस फॉर द करप्शन। देन देयर इज अ टॉपिक इटसेल्फ, चैलेंज ऑफ करप्शन। इसलिए उन्होंने करप्शन स्पेशली मेंशन किया है कि टिल द टाइम व्हेन देयर इज अ करप्शन there cannot be good governance, right? Ultimately corruption may be moral corruption, may monetary corruptions and different sphere, right? And then again he mentioned about the code of ethics and code of conduct, right? तो ये है। तो अगर आप देखेंगे, अगर आपको आंसर राइटिंग भी करनी है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे आंसर राइटिंग करनी है, कोई क्वेश्चन आउट ऑफ बॉक्स आ गया, then you follow this syllabus, right? Probity and governance, so you can mention that this thing will promote the probity and governance, right? You can correlate with the public service, right? फिलोसफिकल बेसिस में जो हम डिस्कस करेंगे, आप उसको थोड़ा आप आंसर राइटिंग में नोट डाउन कर दीजिए। अगेन अगर इंफॉर्मेशन ट्रांसपेरेंसी रिलेटेड क्वेश्चन है, देन यू मेंशन अबाउट द आरटीआई एंड देन हाउ इट विल प्रमोट द ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी एंड पीपल्स पार्टिसिपेशंस। देन ए डायरेक्टली क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड फ्रॉम द सिटीजन चार्टर, राइट। तो अगर वो इंफॉर्मेशन ट्रांसपेरेंसी का पूछ सकता है कि व्हाट आर द इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट, देन यू मेंशन आरटीआई एक्ट, सिटीजन चार्टर, देन क्वालिटी ऑफ सर्विसेज। तो सिलेबस हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि जब आप आंसर राइटिंग करें, यू ट्राई टू, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ गवर्नेंस का कोई टॉपिक है, अगर कोई एग्जाम पूछ रहा है, तो यू ट्राई टू इनकलकेट दोस टॉपिक्स विद योर आंसर राइटिंग, राइट। तो वो हर डोमेन स्फीयर को कवर कर लेगा। एंड देन लास्टली यू विल से ए करप्शन फ्री सोसाइटी शुड बी देयर, राइट। इवन विद इन द गवर्नेंस देयर शुड बी नो प्लेस फॉर द करप्शन, राइट। कोई करप्शन होगा तो ऑफ कोर्स आरटी एक्ट का कोई सेंस नहीं बनता, सिटीजन चार्टर का कोई सेंस नहीं बनता, इवन लास्टली प्रोबेबिलिटी इन गवर्नेंस हो ही नहीं पाएगा। तो ये है बेसिकली, राइट। तो अगर एग्जामिनर पूछता है व्हाट इज प्रोबेबिलिटी, राइट, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी, तो क्या है प्रोबेबिलिटी? बताइए मुझे, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी अकॉर्डिंग टू यू? बताइए क्या प्रोबेबिलिटी है? बताइए, कुछ भी बताइए, कोई इशू नहीं है। Sir, it is the quality of having strong moral principles. वेरी गुड। इज द क्वालिटी टू अपहोल्ड moral principles, very good principles in public sphere, right? जनरली हम ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी की बात करते हैं तो वो एक इंडिविजुअल एस्पेक्ट में बात करते हैं, सच कोई क्लियर डिमार्केट नहीं है, बिकॉज दीज आर द वैल्यूज। तो वैल्यूज में कोई मैथ तो है नहीं है कि 2 + 2 4 ही होता है। दीज आर एक्चुअली
आर्ट सब्जेक्ट से, तो इनमें थोड़ा रिलेटिविटी हो जाता है, देयर एक्सचेंज भी हो जाता है। बट जनरली जब हम ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी की बात करते हैं कि देयर इज कैन नॉट बी ए क्लियर का डिमार्केटेड कि ये ऑनेस्टी होता है और ये इंटीग्रिटी होता है, ऐसा कभी नहीं होता। बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी। सेम एज जब हम ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी की बात करते हैं तो जनरली इट इज रिलेटेड टू द इंडिविजुअल एस्पेक्ट, राइट। A person can be honest, a person can be integrate, can uphold the integrity. No doubt, organization भी integrity uphold कर सकता है, but generally with respect to the governance or with respect to the group or institutions, we talks about the probity, right? That's why they use the term probity in governance. So quality to uphold moral principles in public sphere known as the probity, right? और easy way में हम बोल सकते हैं upholding the uprightness, right? Uprightness, right? अपराइटनेस में अब क्या क्या हो सकता है, क्या क्या हो सकता है अपराइटनेस में? अपराइटनेस में क्या हो सकता है? आपकी इंटीग्रिटी हो सकती है, आप ऑनेस्टी है, ऑनेस्टी हो सकती है, राइट। तो इन चीजों को भी आप फॉलो कर रहे हैं, देन यू आर अपहोल्डिंग द प्रोबिटीज। सेम इम्पार्शलिटीज, जो भी हमने फाउंडेशनल वैल्यू सिविल सर्विसेज की देखी थी, वो जो हम डिस्कस करेंगे तो वो प्रोबेटी हो जाएगा। विद रिस्पेक्ट टू द गवर्नेंस, एज हम टॉकिंग, वी आर टॉकिंग अबाउट द विद रिस्पेक्ट टू द गवर्नेंस, then if there is a confidentiality is there, right? As a government servant, no doubt you have to promote the transparency and accountability, but it is very much necessary that confidentiality, जो confidential information, they should not be come out, right? Because they can threat the nation. That's why then dedication to the public service. तो ये सब पार्ट किसके हैं? आपके प्रोविटीज के पार्ट है। तो upholding the uprightness और upholding the ethical and moral principles such as integrities, dedication to the services or foundation value of the civil services is known as the probity। ठीक है, तो यहां तक समझ में आया probity का क्या पर्पज है? So during the public service, a public servant must uphold probity in governance, right? प्रोबेटी क्या करना, गवर्नेंस में उसको अपहोल्ड करके रखनी है, right? उससे क्या होगा? पब्लिक सर्विस, पहली बात, अगर पब्लिक सर्विस किसी को पता है तो बताइए क्या है पब्लिक सर्विस? व्हाट इज द पब्लिक सर्विस? कभी कभी एग्जाम में डायरेक्टली पूछ सकते हैं, क्योंकि एथिक्स फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हो रहा है, देन एग्जामिनर कैन डायरेक्टली आस्क यू व्हाट इज द पब्लिक सर्विस, क्या है पब्लिक सर्विस अकॉर्डिंग टू यू, बताइए। They're supplying goods and services to citizens through government entity. ठीक है, वो तो गवर्नेंस हो गया, राइट, वो तो गवर्नेंस हो गया ना। Sir, governance हो सकता है, for example, governance is about governing people, but public service is about providing the services, but you are not exactly governing. So I think No, there is in a governance we difference. also provide the services also. Yes, sir. Governance is a bigger set within which public service can accommodate. Right. If I say, Sir, can you say that public service is the service by the people, for the people, of the people? okay, by whom? By government, by public servant, right? Yes, by the people, the common public. Okay, so public servant serve the public, ठीक है, that is known as the public service, right? ये समझ में आया? That's why we call him servant. When the public servant serve the public, that is known as the public service, right? अब इसमें हो क्या रहा है, नो डाउट डेफिनेशन भी हम देखेंगे। तो अल्टीमेटली जो पब्लिक सर्वेंट वो क्या हुआ, मीन हुआ, That is for welfare of public. वेरी गुड, वेलफेयर ऑफ पब्लिक, वेरी गुड। तो वेलफेयर ऑफ पब्लिक क्या हुआ आपका, एंड हुआ ना, स्टेट हुआ या गवर्नमेंट हुआ, और गवर्नमेंट हो या फिर पब्लिक सर्वेंट हो, इट इज आल्सो पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, इज ए मीन टू सर्व द पीपल और
टू वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। तो ये एंड हुआ, राइट। अब उसमें गुड्स और सर्विसेज कुछ भी हो सकता है, अलग अलग वे हो सकता है, ई गवर्नेंस हो सकता है, राइट, या फिर डीबीटी हो सकता है, अदर मेथड्स यूज कर सकते हैं वो। सो पब्लिक सर्वेंट इज ए मीन टू सर्व द पीपल। तो पीपल, तो ये पब्लिक सर्विस है, वो एक मीन है फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पीपल। इन केस अगर डेफिनेशन पूछी जाती है तो मैं डेफिनेशन बता देता हूँ आपको, ये मेरे को एक समझाने का तरीका था। अगर वो पब्लिक सर्विस की डेफिनेशन पूछता है, देन इट इज ए एक्ट ऑफ सर्विंग, एक्ट ऑफ सर्विंग टू जनरल पब्लिक selflessly, right? Selflessly. To serve the general public selflessly by public servant. Public servant. While set aside personal interest, while set aside personal interest and put forwarding public interest ahead of everything, right? समझ में आया डेफिनेशन? दिस डेफिनेशन फ्रेम्ड बाय, मैंने बनाया डेफिनेशन ये। तो अब इसमें देखो, पब्लिक सर्विस को क्लियरली डिमार्केटेड कर रहा है ये, क्योंकि वो खुद के लिए काम नहीं कर रहा, एक्चुअली वो गवर्नमेंट के लिए भी काम नहीं कर रहा। ही इज बेसिकली वर्किंग फॉर द पीपल। No doubt government is a representative of the people, so they frame the policies, right, through it is a part of the governance, but ultimately they are acting for the betterment of the people, because that state is a welfare state. So public service क्या हुआ? It is an act of serving to general public selflessly, selflessly होना चाहिए वो, right, by public servant while set aside in personal interest, वो personal interest के लिए काम नहीं करेगा, and put forwarding public interest ahead of everything. तो किस लिए बेसिकली काम करेगा? वो पब्लिक इंटरेस्ट के पर्पस से काम करेगा सेल्फलेसली, सो दैट ही कैन सर्व द जनरल पब्लिक। आगे सब चीजें इसमें क्लियर, राइट? तो ये सारा आपका पब्लिक सर्विस में जो जो चीजें हो सकती हैं वो आप आराम से लिख सकते हैं। देन यू कैन से जो गवर्नेंस है वो एक पार्ट है। सो इन ऑर्डर टू सर्व द पब्लिक सर्विस, इट इज वेरी मच important दैट देयर इज अ नीड फॉर प्रोबिटी इन गवर्नेंस, राइट? आप पब्लिक सर्विस कैसे करेंगे? जब तक प्रोबिटी अगर गवर्नेंस में नहीं होगा तब तक आप पब्लिक सर्विस कर सकते नहीं कर सकते, राइट? फाइन, यहाँ तक समझ में आया? अब देखते हैं गवर्नेंस क्या होता है। हाँ जी कहिए। राइट, ऐसा ही लिखना है हमें, ऐसा कोई वो नहीं है कि हम इथिकल चीज अननेसेसरी उसमें लिखेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जो एक्चुअल चीज है वही हम लिखेंगे, बट इथिकल डोमेन हम सब चीजें कवर कर रहे हैं, राइट? सेल्फलेसली हमने कवर कर ही लिया, इसमें पब्लिक इंटरेस्ट कवर कर ही लिया हमने, तो वही एथिक्स है। नाउ कम्स टू द गवर्नेंस। व्हाट इज गवर्नेंस? तो हमें पता ही है कि देयर इज अ स्टेट, एंड स्टेट मेक रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पीपल, राइट? राइट, किसी का माइक ऑन है, प्लीज उसको ऑफ कर लीजिए अगर आपके लिए जरूरत नहीं है तो, राइट? राइट, यहाँ तक समझ में आया? क्योंकि एक स्टेट है, इट रिप्रेजेंट द विश ऑफ पीपल, विश ऑफ पीपल। तो क्या करती है गवर्नमेंट? मेक द रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द पीपल। किसी का माइक ऑन है, प्लीज ऑफ कर लीजिए उसको, राइट? उनको बता दीजिए जो भी आप देख सकते हैं किनका ऑन है, राइट? फाइन, तो रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर द सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पीपल, तो इसको बोलते हैं गवर्नेंस। बट यू नो दैट रूल्स एंड रेगुलेशन इज नॉट इनफ इटसेल्फ। आपने लॉ बना दिए, रूल्स एंड रेगुलेशन बना दिए, राइट, बट इट्स सेल्फ नॉट इनफ। सर एक मिनट रुकिए। Respected Sujit sir, would you please off your mic?
Okay, thank you so much. तो laws, rules and regulation are enough itself, क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशन तो काफी टाइम से है. तो व्हाट यू नीडेड, आपको क्या चीज की जरूरत है? देयर शुड बी इफेक्टिवनेस, राइट, एंड एफिशिएंसी शुड बी देयर, राइट. देयर शुड आल्सो बी ट्रांसपेरेंसी and accountability, so that so that the government services can be delivered in a effective manner, right. तो क्वालिटेटिव आप क्या कर देंगे, गवर्नमेंट सर्विसेज उनको क्या कर देंगे, आप डिलीवर कर देंगे, राइट. तो जब लॉ एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस में आप जो सर्टेन वैल्यूज हैं गुड गवर्नेंस की, वी विल डिस्कस इट लेटर, जब उनको इंक्लूड कर लेते हैं, उसको क्या बोलेंगे आप, गुड गवर्नेंस बोलेंगे, राइट. उनको आप क्या बोलेंगे, गुड गवर्नेंस बोलेंगे. देन अगेन, जब ये गुड गवर्नेंस में जब एथिकल एंड मॉरल प्रिंसिपल्स भी इंक्लूड कर लेंगे, एथिकल एंड मॉरल प्रिंसिपल्स, फॉर एग्जांपल कंपैशन, एम्पैथी. जब एथिकल स्फीयर में जब आप बात करेंगे, जब एथिकल डोमेन्स भी आ जाएंगे, या फिर आप कॉन्स्टिट्यूशन मॉरलिटी की बात करेंगे, when the governance is per the constitutional moralities, and constitution is not a rigid or non-living document, rather than it is a living document, which is basically focusing on the weaker section of the society. It shows the compassion or empathy. Then this governance will be ethical governance, right. तीनों में अंतर समझ में आया आपको, ये बता दीजिए मुझे, क्योंकि एग्जाम में कैन आस्क यू डिफरेंस अमंग दीस थ्री. बताइए. Sir, can you please repeat this this flow chart? ओके, आपकी जो गवर्नेंस है, राइट, एक तो स्टेट हो गया, राइट. देयर इज ए स्टेट govern the people for their betterment, right. ये समझ में आया, स्टेट गवर्न पीपल फॉर देयर बेटरमेंट. एंड देन जब गवर्नेंस किस बेसिस पे की जाती है, व्हेन देयर इज अ गवर्नेंस बेस्ड ऑन लॉ, रूल्स एंड रेगुलेशंस, राइट, then it is known as the governance, right. क्योंकि आप कोई स्कीम प्रोग्राम्स लाएंगे तो उसकी आपके लिए लॉ बनाने पड़ेंगे, आपको रूल्स बनाने पड़ेंगे, रेगुलेशन बनाने पड़ेंगे, then it is known as the governance. But laws, rules and regulation itself are not enough for the betterment of the people, right. क्योंकि आपने पेपर पे तो बहुत अच्छी चीज बना ली, right, but there is a no accountability, but there is a no such transparencies, rather, and there is a no views of the people. आपने कोई लॉज बनाए, उसमें लोगों का पार्टिसिपेशन ही नहीं है. there is no transparency within the laws, when there is a no accountability within the laws, when there is a no rule of law, there is a no effective or efficiency in the governance, then do you think that governance will be good? बताइए मुझे आप. नहीं ना. So when you make the law, rules and regulation, and then these law and rules and regulation also include some principles such as transparency and accountability, responsiveness, equitable and inclusiveness, effective and efficiency, people's participation, and consensus for people, then this governance is known as the good governance, right. ये समझ में आ गया दोनों, ये चीजें समझ में आ गई दोनों सबको, ये बता दीजिए, फिर थर्ड की तरफ मूव करेंगे. Yes, sir. Yes, sir. Fine. When this good governance have ethical and moral part, ethical and moral values जब इनमें
आप इसमें पार्टिसिपेट कर दोगे. फॉर एग्जाम्पल कंपेशन और एम्पैथी टुवर्ड्स weaker section of the society, right? Plus upholding the constitutional moralities, maintaining the constitutional morality. Then this good governance will be the ethical governance, right? तो यहाँ पे तो क्या हो रहा है, गवर्नमेंट के थ्रू आ रहा है, बट यहाँ पे गवर्नमेंट क्या हो रही है, राइट हो रही है, अपहोल्डिंग द वैल्यूज. व्हाट एथिकल गवर्नेंस में इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव लेवल दोनों पर एक्शन किए जाते हैं. यहाँ पे तो आप लॉ तक लिमिट हो गए, लॉ से आप बोल रहे हैं आप सिविल सर्वेंट को यू वर्क फॉर द पीपल्स, सर्टेन लॉज इंप्लीमेंट देम. यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, आप इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे हैं, पीपल्स पार्टिसिपेशन की बात कर रहे हैं. दैट्स व्हाई यू कॉलिंग इट अ गुड, बिकॉज इन डेमोक्रेसी द मोर द पीपल बेटर इफेक्टिवनेस, राइट, बेटरमेंट ऑफ द पीपल इज द अल्टीमेटली एंड. तो जब आप ट्रांसपेरेंट अकाउंटेबिलिटी की बात करेंगे, रेस्पॉन्सिवनेस की बात करेंगे, तो क्या होगा, जो गवर्नमेंट सर्विसेज है दे विल बी इफेक्टिवली इम्प्लीमेंटेड in the time bound manner. Then this governance will be the good governance. But despite of good governance, there is some ethical and moral values should be also be there in governance, right? तो जब आप ethical and moral values को inculcate करते हैं, उसमें compassion है, empathy है, उसको करते हैं, then it is known as the ethical governance. ये समझ में आया? Yes, sir. क्लियर है ना बिल्कुल? अब कोई किसी तरह का डाउट तो नहीं है ना इसमें, बिकॉज एग्जाम No, में sir. आस्क हुई और इसमें काफी लोगों के इश्यूज भी आते हैं वो, राइट? ये आपका तीनों चीजें हो गई. यहाँ पे लॉ तक लिमिट है, वहां पे आपने कुछ सर्टेन वैल्यूज इंकलकेट की, एंड देन अगेन यू कम्स टू द एथिकल. तो विच वन इज बेटर अकॉर्डिंग टू यू? Ethical. Ethical. वेरी गुड. एथिकल शुड बी ऑन द टॉप. तो आप अगर ट्रायंगल भी ड्रॉ करना, यू कैन ड्रॉ द ट्रायंगल स्ट्रेट. तो मोरलिटी शुड कम और एथिक्स शुड बी कम फ्रॉम विद इन इटसेल्फ, रादर देन कि फ्रॉम कोई और आप पे इंपोज कर रहा है. तो यहाँ पे आप गवर्नेंस लिख सकते हैं, वो लॉ तक लिमिट रहेगा, देन इट विल बी योर गुड गवर्नेंस, एंड एट द टॉप विल बी द ethical governance, right? Then you can mention यहाँ पे law, rules and regulations when it is related to transparency and accountabilities, responsiveness and people's participations, and it is include the ethical and moral values, right? But आप एक बात बताइए मुझे, can there be ethical governance without the good governance? Yes, sir. नहीं हो सकती ना. No, sir. अगर आप केवल कंपेशन और एथिकल मोरल वैल्यूज हैं केवल आप में, पर ये अगर आप फॉलो नहीं कर रहे तो कहाँ से होगा? आई सेड कि कोई सिविल सर्वेंट है, उसको रूल तो फॉलो करना ही है अलोंग विद कंपेशन. ये नहीं कि केवल कंपेशन ही फॉलो कर रहा है और एम्पैथी फॉलो कर रहा है, रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं कर रहा, दैट इज बैड. प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी के लिए आपको दोनों चीजें जरूरी है, राइट? ये भी नहीं कि अगर कंपेशन ही फॉलो करो, आप रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं कर रहे, दैट विल आल्सो बी बैड. समझे? 2 + 4 = 6, राइट? तो 6 में 2 और 4 है या नहीं है? है या ना? 1 2 3 4 5 is already included in the 6, right? Same with this case, governance is at the bottom, but good governance is also have the governance. कह रहा है ना वो, बट वो गवर्नेंस कैसा है? गुड है. तो ये इसका क्या है, एक बेटर पार्ट है. उसमें गवर्नेंस के तो होंगे सारे प्रोविजंस, जो बैड पार्ट होंगे उसको एलिमिनेट कर देगा. इट विल हैव द बेटर पार्ट ऑफ द गवर्नेंस, दैट इज इट इज नोन एज द गुड गवर्नेंस. एंड एथिकल गवर्नेंस में गुड गवर्नेंस के पार्ट तो होंगे ही होंगे, but it will also have the ethical part of it. आया समझ में? Yes, sir. बताइए. Sir, if there are some instances where there is the ethical values, but the efficiency and effectiveness is not present. So in that case, what should we call that system of governance? क्या कह रहा है, जिस गवर्नेंस में क्या है, मतलब moral values है, ethical values है, but it is lacking in efficiency, accountability. So what kind of governance would that be?
ओके, मतलब वो एक एक्सेप्शनल केस आपने क्रिएट कर लिया, दैट इज आल्सो नॉट फॉर द गुड थिंग, देन यू कैन से Okay. दैट गवर्नेंस इज नॉट अ गुड गवर्नेंस, वो फिर आप कह सकते हो। गुड Okay. गवर्नेंस भी सर नहीं कह सकते आप उसको, बट वो ऐसा केस नहीं बनाएगा, बट यू हैव टू कंक्लूड विद इट कि along with the ethical and moral values a person should also having the competency, right? सर कैन यू से दैट इनकॉम्पिटेंट गवर्नमेंट? नहीं, ऐसा कोई टर्म नहीं होता, ऐसा कोई, एक्चुअली हम वही टर्म यूज करेंगे जो यूज किए जाते हैं। इनकॉम्पिटेंट तो नहीं कह सकते, क्योंकि अगर वो एक सेगमेंट के कारण हम इनकॉम्पिटेंट नहीं कह सकते उसको, क्योंकि इनकॉम्पिटेंट इटसेल्फ नेगेटिव टर्म, राइट? क्योंकि एथिकल इज आल्सो पार्ट ऑफ इट, बट ऐसा एग्जाम क्वेश्चन नहीं बनाएगा, बट वो इस तरीके से बनाएगा कि पर्सन इज देयर और गवर्नमेंट इज देयर, इट इज अपहोल्डिंग द एथिकल एंड मोरल वैल्यूज बट lacks the transparency and accountability or effectiveness in deliverance of the government services. So do you think this government is a good or bad? फिर वो opinion based question हो जाएगा, then you have to include it, you have to take the equal part of both sides, right? आया समझ में? यस सर। सर ये जो इंडिया का जो ट्रेडिशनल विलेज सिस्टम है, रूरल विलेज सिस्टम बिफोर, मतलब वो उसी टाइप का आई थिंक कैटेगरी में आ सकता है। मतलब दे आर लैकिंग इन एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस बट दे आर कंपैशनेट। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। गवर्नेंस ओके। में ये प्रायोरिटीज है, गवर्नेंस के लिए प्रायोरिटी कि फर्स्ट हैव टू गुड गवर्नेंस, ऐसा नहीं है। आप कंपटीशन तो आपको मिलेगा ही नहीं कहीं पे इंडिया में, आप जाओ कभी पब्लिक ऑफिस गए आप? हाँ सर। हाँ, तो वहां पे आपको कौन सा एथिकल डोमेन दिख गया बताइए मुझे? नहीं सर, मैं गवर्नेंस नहीं दिखता पब्लिक पहले। ऑफिस के बारे में बात नहीं कर रहा था, मैं बोल रहा था कि विलेज सिस्टम, मान लीजिए पंचायत इट्स लाइक, मतलब बिफोर नहीं कॉलोनियल नहीं, टाइम, अभी मतलब तक बिफोर इंडिपेंडेंस जो। currently we are following the good governance pattern everywhere, right? But we are यस। saying that we should move toward the ethical governance, ये है अभी current scenario में, right? अभी कहीं पे भी ethical governance follow नहीं होता है, but on the paper government के recommendations हैं, because ethical governance is a subjective terms, right? और good governance और governance के objective terms, in case of violation of it public servant can be punished, but here ethical governance a public servant cannot be punished. For example, कोई person आया आपके पास, आधार नहीं है and you are not benefiting him because he does not have the document, तो आप उसको पनिश कर सकते हैं ऑफिसर्स को, you cannot punish them because there is no as such rule, right? तो यही गवर्नेंस गुड गवर्नेंस है, क्योंकि ये एक ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया है, एथिकल गवर्नेंस ये सब्जेक्टिव क्राइटेरिया है। तो यहाँ पे एक इंडिविजुअल एथिकल बिहेव करता है वो उसके डोमेन में आता है, right? तो ऐसे काफी क्वेश्चंस बन जाएंगे, बट एग्जाम में नहीं आते, राइट? तो एग्जांपल है वो, जो एग्जांपल हमेशा से लो जो नॉन डिबेटेबल्स हो, दैट विल बी बेटर फॉर यू, राइट? सो गुड गवर्नेंस का यू मेंशन के ये उसके पॉइंट्स आउट होते हैं, एंड एथिकल गवर्नेंस की क्या क्या वैल्यूज होती है, राइट? ठीक है, और कोई डाउट है आपका? ठीक है, नेक्स्ट मूव करें। तो दोनों में अंतर समझ में आ गया ना? Yes, sir. हाँ सर। ठीक है, तो आप क्वेश्चंस भी क्या होता है ना, एग्जामिनर भी क्वेश्चन किसी फाउंडेशन पे फ्रेम करेगा जो एक्चुअलिटी पे फ्रेम करते हैं एथिक्स में क्वेश्चन, या कहीं पे भी आप देखोगे वो एक एक्चुअल इश्यूज पे क्वेश्चन फ्रेम करेंगे, और जो इश्यूज भी होंगे वो जेन्युइन इश्यूज रहेंगे, राइट? तो उसी पर फॉर्मेशन करेंगे क्वेश्चन, राइट? नो डाउट कुछ इश्यूज होंगे, बट ज्यादा ध्यान नहीं देना है। देन द एग्जामिनर कैन आस्क यू कि व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ प्रोबेबिलिटी इन गवर्नेंस। देखो, किसी के डाउट आ रहा है, नो डाउटली आप पूछना चाहिए सबको, राइट? इट इज अ गुड थिंग रादर देन हैविंग द डाउट, तो क्लियर हो जाएगा। बट आई ट्राई टू आंसर ऑल दोस क्वेश्चंस जो हमारे लिए एग्जाम के लिए रिलेवेंट होते हैं, जो होते हैं मैं बता देता हूँ, राइट? सो जस्ट बिलीव मी कि जो अगर मैं मना कर रहा हूँ वो एग्जामिनर नहीं पूछेगा, यू हैव टू बिलीव मी, राइट? फिर पेपर देके आएंगे उसके दिन कर लेना बिलीव, राइट? सो प्लीज टेल मी व्हाट इज द एडवांटेजेस ऑफ प्रोबेबिलिटी इन गवर्नेंस, क्या एडवांटेज है? सर गुड गवर्नेंस के जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे, जैसे कि एफिशिएंसी हो गया, इफेक्टिवनेस हो गया, वो सारे इसमें आ जाएंगे। वेरी अकाउंटेबिलिटी। गुड। So I can say the probity in governance promote the good governance, right? Right. आपके सारे पॉइंट्स हैं वो गुड गवर्नेंस के लिए थे। Yes, sir.
Sir, efficient public service delivery. ओके, वो भी मेरे फिर वो गुड गवर्नेंस की पार्ट हो जाएगा, राइट? जी जी. व्हाट एल्स? Trust building. वेरी गुड. ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग. कॉन्फिडेंस बिल्डिंग पूरा बताइए क्या होगा, किसमें होगा? कॉन्फिडेंस बिल्डिंग इन Democratic institutions. वेरी गुड. डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन. वेरी गुड. इंस्टीट्यूशंस. वेरी गुड. तो वो क्या होगा यहाँ पे? चेक ऑन करप्शन, राइट? वेरी गुड. ये गुड गवर्नेंस से कोरिलेट करना चाहिए तो कर सकते हैं आप. थर्ड, Sir, sensitive governance. वेरी गुड. सेंसिटिव गवर्नमेंट. वेरी गुड. व्हाट्स योर नेम? Sir, Sai Krishna. ओके. ओके, वेरी गुड. फोर्थ पॉइंट क्या होगा? Sir, feedback mechanism and participative democracy. Okay, you can say it, but it is a trust building, or you can also add in the good governance, right? Because public participation is also the part of the good governance, right? You can add it, no doubt. अगर आप पे points नहीं create हो रहे, you have to mention those points because आपको 2 पेज लिखने हैं. But I try to bring new points, right? Sir, it gives a human touch to the Sir, better mechanical governance. welfare management. क्या करें आप? Sir, better welfare management. Okay, वो good governance का ही हो गया. Sir, can you say that it will give a human touch to the mechanical governance, mechanically following rules and regulations? Trust and confidence हो गया वो. Trust and confidence आ जाएगा. Sir, strike, revolt, ये सारा कम हो जाएगा. Okay, very good. So what trust and confidence में हो जाएगा, right? Because if there is no trust and confidence of the people within the government, there will be dissent. Very good. Sir, proactive governance. Sir, smooth and expedite service delivery. Okay, वैसे वो good governance का part है, but we can write it smooth and or better smooth एक informal word हो जाएगा. Effective and efficient delivery of services, right? Smooth is informal word, or you can say qualitative delivery of services. Very good. Sir, proactive governance. Okay, good governance is also a proactive governance, or you can also say people-centric governance, right? तो good governance उसको ही वो next term बोलते हैं. Very good. Clear else? communication between government and public. Okay, there is be better effective implementation. Very good. वो good governance की part हो जाएगा. Do you think that justice will be effectively delivered? Right? Okay. If there is a probity in the governance, then justice will be effectively delivered, and justice is known as the fairness, right? So the decision of the government will be taken fairly rather than favoring certain group of people, right? When there is a probity in the governance, then justice will be effectively delivered, and there will be a fairness in the society. No doubt, it will also lead to the socio-economic development, and this governance not only a good governance, but also a ethical governance, right? Sir, it will prevent conflict of interest. क्या कह रहे हैं? Sir, it will prevent conflict of interest. ठीक है, वो तो एक छोटा टर्म हो जाएगा, तो उसको नहीं लिखेंगे अपन. ठीक है, तो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट अलोंग विद यू कैन लास्टली से दैट देयर विल बी ए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, राइट? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी क्या होगा? जब ट्रस्ट, लोगों का ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस होगा, then government institution they will basically work for the betterment of the people, so there will be political stabilities. So these are the advantage of the probity in the governance, right? ठीक है, आए समझ में? गुड गवर्नेंस का डेफिनेशन मैंने बता ही दिया है किस तरीके से तीनों में डिफरेंस है.
राइट. तो सम बेसिक फीचर ऑफ द बेसिक एथिकल गवर्नेंस के कम क्वेश्चन पूछते हैं, वो रिलेशन पूछ सकते हैं. बेसिक फीचर ऑफ गुड गवर्नेंस, firstly is, as someone said, it is a proactive or people centric, yes, citizen centric governance जितना भी है उसको आप क्या बोलते हैं, that is the good governance. Then speedy delivery of the services. Third, effective and efficient administrations. So basically these are the three important pillars of good governance, and it is also part of the e-governance. For example, DBT is there, BHIM is there, right? So these are the governance app. So these are the example of. Generally, if you have UNDP or the UN के कुछ organization है, they declare there are certain key attribute of good governance. Right? So basically, you have to write these things. Okay, what are the key attributes of the good governance? Right? The key attributes of the good governance. Right? तो जो हम डिस्कस किए वही है बेसिकली. You just draw a diagram that will be good. तो आप एग्जाम में हमेशा डायग्राम कर दीजिए. राइट. फर्स्ट इज ट्रांसपेरेंसी. ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट है, अकाउंटेबल, रेस्पॉन्सिव, देन इक्विटेबल and inclusive, then effective and efficient, then follow rule of law and people participatory, and then along with consensus oriented. So basically these are the 8 features for the or key attributes of the good governance, right? So good governance, actually you can also mention within diagram, good governance is equal to the people centric governance, and when this government is implement this thing, then it is the state is the welfare state, right? आप देख लीजिए जो लॉज रूल्स एंड रेगुलेशंस है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, राइट, फॉर द गवर्नेंस. जब तक रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं बनाएंगे तब तक ये चीजें इंप्लीमेंट हो पाएंगी. इट इज नॉट पॉसिबल विदाउट द आरटीआई एक्ट. डू यू थिंक दैट और जो अदर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है, राइट, उनकी वाला डू यू थिंक दैट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी कैन बी मेंशन? तो गवर्नेंस को जब आप गुड करना है, देन इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट दैट certain provisions should also have transparency, accountability, responsiveness, equitable inclusiveness, and effective, efficient, follow rule of law and people's participations and consensus oriented, right? आई समझ में? हम अगर एग्जामिनर आपसे पूछता है कि write any 4 or 5 features for the good governance, right, then you include these 2 things together, transparency and accountabilities. हेलो. Then हाँ जी, हाँ बताइए. Right, then you include people's participation, because in democracy is very much important, people's participation is very much important. Then you also write the consensus oriented, and then you write effective and efficient. All right, you can mention these 4 things necessarily, right? अगर वो सारा पूछ रहा है only questions related to the good governance, you just draw this chart. ठीक है, आप इस फिगर को आप केवल ड्रॉ कर दीजिए पूरा, right? There's a 8+ for it. Then examiner will give you the good marks, right? Now हम एक एक करके समराइज वे में डिस्कशन कर लेते हैं सारे पॉइंट्स को, राइट? फर्स्ट इज द रूल ऑफ लॉ. टेल मी व्हाई रूल ऑफ लॉ इज इंपॉर्टेंट इन गवर्नेंस. बताइए. Corporate malpractice. वेरी गुड. वो सारी चीजें माल प्रैक्टिस से रोकेंगे, राइट? एंड Sir, or else it will lead to anarchy.
ठीक है, limited government, fine, anarchies, okay, very harsh word. You know the Article 14, what Article 14 says that you can mention Article 14, no issues in it, right? It promotes the idea that in the eye of law, all are equal, right? In the eyes of law, all are equal. So it will check arbitrary power of government, because government is ultimately who's promoting the good governance. तो जो गवर्नेंस के पास जो आर्बिट्री पावर है उसको क्या करेगा, वो चेक करेगा. That's why it will safeguard the fundamental rights of the people. So आप आर्टिकल 14 की बात कर रहे हैं, right? And also protecting the आर्टिकल 19, आर्टिकल 21. आप देखेंगे आर्टिकल 21 की जो काफी जो प्रोविजंस हैं, they came out based on the different interpretation of the judiciaries. They are also the part of the good governance. Right to live with the dignities, clean environment, right to die with dignities. That is also the part of the good governance, right? So in that scenario, when there is a rule of law, then the concentration of power will not be in the hand of few people, right? ये rule of law, right? तो कैसी गवर्नमेंट नहीं होगी, वो डेस्पोटिक गवर्नमेंट नहीं होगी. The government will not be despotic government, rather than the rights of every individual will be the protected, right? तो ये स्टेट को क्या करता है कि इक्वल सबको ट्रीट करने की बात करता है, right? Second is people participation. Why people participation is very much important for the good governance? बताइए. To uphold democracy. Very good. So it will promote the form of the direct democracy, right? So in democracy, if someone asks you which democracy is important, direct or indirect, you will say direct democracy. That's why the Panchayat Raj institution was promoted. It is the democracy at the very grassroots level. Very good. So it will promote the direct democracies and very good. और participatory democracies दोनों को promote कर रहा है. Very good. What else? Also to get the feedback whether the mechanism is running efficiently or not. Very good. So it will also get the feedback from the public so that modification can be changes accordingly, right? Very good. What else? If I ask you what time the class should be, and you say 6 p.m. आपने सभी ने कहा 6 p.m. but किसी ने कहा 5 p.m. right? तो जिन लोगों ने 6 p.m. कहा, even if they don't want to come for the class, still they will come the class. ऐसा होता नहीं होता है? क्यों? क्योंकि वो एक्सेप्टेंस होता है, इंक्लूसिव होगा उसमें. तो जब आप पीपल्स का पार्टिसिपेशन करेंगे तो क्या होगा? इट विल बी मोर इंक्लूसिव, it will be more inclusive and wider acceptance. Am I right? So क्या होगा? There will be effective implementation of the government programs or schemes. तो पीपल पार्टिसिपेशन का ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जब भी आप लॉज लाते हैं, राइट, या फिर अपन जो स्टैंडिंग कमिटीज में बिल सेंड करते हैं, उसका पर्पस सिर्फ यही होता है. बिल में पीपल्स ओपिनियन का क्या पर्पस रहता है? बिकॉज it brings the diverse view of the people. When the people's having the diverse view and they are included in that, then it shows the inclusiveness of the people's view, along with it leads to the wider acceptance of the law, right? अगर आपसे कुछ चीज पूछ के करेंगे तो आप उसमें acceptance उसका आपका enhance होगा, right? Then trust building भी बढ़ेगी आपकी. Third is
कंसेंसस ओरिएंटेड, राइट, कंसेंसस ओरिएंटेड। यहाँ पे तो क्या आपने पीपल्स की पार्टिसिपेशन की बात कर ली, ठीक है, आप आइए अपना व्यू दे दीजिए, बट नो नेसेसरली कि ईच एंड एवरी वन इज कंसेंसस। कंसेंसस का मतलब होता है कि हर का व्यू लेके एक्सेप्ट करो आप उसको, राइट। एंड यू नो दैट कि इंडिया इज अ डाइवर्स नेशन, कल्चर, लैंग्वेज, राइट, religion is there. So when you're implementing schemes or programs, you're making laws, right? So सबका अगर आप consensus लेके कोई चीज को frame करेंगे, then it will also show the inclusiveness of the society, right? वो भी क्या दिखाएगा? Because inclusiveness दिखाएगा, and it will also lead to wider acceptances. But one more important thing is there कि जब भी आप consensus की बात करते हैं, then it is very much important that minorities' rights are protected. And that governance won't be a majoritarian governance, right? कंसेंसस में ये एडवांटेज होता है, जैसे एनर्जी ग्रुप है, न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप है, वो कंसेंसस बिल्डिंग पे काम करता है, दैट्स व्हाई इंडिया इज नॉट गेटिंग द मेंबरशिप ऑफ इट, राइट। चाइना मना कर देता है, देयर इज नो वोटिंग पैटर्न इज देयर, वोटिंग पैटर्न होता तो इंडिया हो जाता मेंबर अभी तक। तो कंसेंसस में ये होता है कि सबको आप मिलाकर सबके साथ डिस्कशन करके, एंड ऑल आर एग्रीज विद दिस थिंग, राइट, सब एग्री करते हैं उस चीज को। इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल थिंग, बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द गुड गवर्नेंस, देन कंसेंसस ओरिएंटेशन शुड बी देयर, जिससे क्या होगा, सारे लोग अपना व्यूज देंगे, वाइड एक्सेप्टेंस होगा, एंड द रूल विल नॉट बी द मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट, रादर देन द इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटीज विल आल्सो बी प्रोटेक्टेड, राइट। उससे क्या होगा, it will again enhance the people's participations, and it will lead to the vibrant democracy, right? क्योंकि डेमोक्रेसी में you know that there should be equalities and liberties, सबके थॉट्स है, स्पीच एक्सप्रेशन है, सबके आना चाहिए, रिस्पेक्ट ऑफ रिलीजन, क्लास, सेक्स, right? So rule of majority will not be there, rather than decision will be taken based on the consensus building, right? So in this scenario क्या होगा कि अगर आप कंसेंसस नहीं है, तो people won't accept it, will show discontent against the law, discontent होगा, then they will protest, जैसे फार्मर प्रोटेस्ट था, नो डाउट सर्टेन ग्रुप्स वर आस्क्ड, द प्रपोजल केम आउट, कमेटी की रिकमेंडेशन थी, उनके बेसिस पे आपने बिल बनाए किसान वाले, सर्टेन ग्रुप ऑफ द फार्मर ऑर्गेनाइजेशन और प्रेशर ग्रुप्स एग्रीड विद इट, बट उसमें कंसेंसस नहीं था, बिकॉज फ्यू किसान यूनियन प्रोटेस्टेड इट। तो क्या हुआ फिर, वही हुआ, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, देयर वाज discontent among certain groups of the people and they protested, right? Then it will lead to a situation of non cooperation, right? तो क्या होगा, ineffectiveness आएगी गवर्नमेंट्स में, that's why consensus is very much important। तो consensus में each and everyone is treated equally, और सबका rights आता है उसमें, right? So it is the next step towards the peoples। आप people participation में आप सबसे पूछ लेते हैं, but the next step you have to consult with the peoples, right? यहाँ तक समझ आया? Then comes to the equitable and inclusiveness। कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट इट इज द नेक्स्ट स्टेप, मूविंग स्टेप्स, बोथ ऑल डायमेंशंस आर इंटरलिंक्ड। इक्विटेबल का क्या पता, इक्विटी और इक्विटी में क्या अंतर है पता है आपको? इक्विलिटी एंड इक्विटी में डिफरेंस पता है क्या है? किसी को डिफरेंस पता है? सर इक्वलिटी होता है जो कुछ भी है सब में एक तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर देना, और इक्विटी Very good. जो है वो सबको एक इक्वल लेवल पे लाना, थोड़ा कम ज्यादा करके, ऐसा कुछ मतलब लिटरल मीनिंग है। Very good, very good, very good, very good. For example, National Food Security Act, right? So basically it is given APL BPL family, right? तो बीपीएल फैमिली वाले को क्या है, जो प्राइस है उसका फूड ग्रेन का वो भी कम है,
अलॉन्ग विथ उनको अमाउंट भी ज्यादा मिलता है। डीपीएल वाले को क्या होता है, थोड़ा प्राइस भी ज्यादा होता है और कम भी मिलता है। एंड देन जो रिच है उनको तो बिल्कुल नहीं मिलता। दैट इज नोन एज इक्विटी। जिसकी जरूरत है उसके हिसाब से उसको देना। इक्वलिटी में क्या होगा, आप सबको ही बराबर दे रहे हैं। तो जो बताया वो बिल्कुल राइटली बताया, सही बताया उन्होंने। होगा ऑन द बेसिस ऑफ कैपेसिटी, on the basis of capacity of person, this will be the distribution of resources, right? तो ये होना चाहिए ना गुड गवर्नेंस में, right? Along with good governance, no one should be left out, right? Especially the weaker section, because a voiceless person cannot raise his voice or her voice. So there should be the person who should be the voice of voiceless, right? So that their rights are all protected, right? तो ये इंक्लूसिव भी होना चाहिए। जैसे फाइनेंशियल इंक्लूजन होता है, तो फाइनेंशियल इंक्लूजन भी बेसिकली फोकस ऑन द दोज हु कैन नॉट अफोर्ड द सर्विसेज, राइट? बिकॉज रिच आर ऑलरेडी है वो केपेबल है, राइट? दिस इज नोन एज। तो जितने भी गवर्नमेंट के अफर्मेटिव एक्शंस हैं, whether it's reservations, whether reservation education or employment, whether related to the food, whether it's related to MG Narega, right? That is basically the equitable and inclusive, right? Then fifth is transparency and accountability, right? That is we have already discussed in detail why it is very much important, right? So ultimately the government is for the betterment of the people, so unko karna hai. So that will be discussed in detail in RTI, right? Fine. Then is responsiveness. Responsiveness का क्या मतलब है, बताइए? What do you mean by responsiveness? So the promptness in which government respond to the grievance of the people. Okay, very good. No, okay. Promptness, very good. Or proactiveness of the government, very good. Fine. What else? Promptness or proactiveness of government, very good. Right. Why only the grievances? Grievances के अलावा और भी उनकी need और demand हो सकती है ना? Sir, feedback Grievance. also. Okay. So government respond to people's aspirations, need and demand, right? अगर ये चीजें फुलफिल नहीं हुई देन ग्रीवेंसेस आते हैं, राइट? सो बेसिकली द पीपल्स की जो एस्पिरेशन है, डिमांड है, नीड है, उसको फुलफिल भी गवर्नमेंट कर रहा है, देन दिस गवर्नमेंट इज अ रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट। बिकॉज पीपल चूज गवर्नमेंट क्यों करते हैं? बिकॉज द गवर्नमेंट कैन फुलफिल देयर एस्पिरेशन, नीड एंड डिमांड, राइट? So if this thing is there, then it will build the trust of the people and confidence of the government. And then Sir, we can say government must be accountable for their actions and choices. yes, accountability से क्या होगा? accountability में वो अपने आप में जो भी एक्ट ऑफ ओमिशन और कमीशन है वो अकाउंटेबल हो जाएगा उसके लिए। बट उसके लिए नेक्स्ट स्टेप अगर आप बात करेंगे वो रेस्पॉन्सिवनेस हो जाएगा, वो खुद से जिम्मेदार होगा। समझे? अकाउंटेबिलिटी फाइन, देयर इज अ लॉ फॉर द अकाउंटेबिलिटी, लोग अकाउंटेबल हो जाएंगे एक्ट ऑफ ओमिशन और कमीशन। बट रेस्पॉन्सिवनेस में प्रोएक्टिवनेस आ रहा है, उसका वो नेक्स्ट स्टेप है, वो खुद से चाह रहा है कि लोगों का अच्छा हो, मैं खुद से अकाउंटेबिलिटी लेके आऊं, खुद से ट्रांसपेरेंसी लेके आऊं, खुद से जो गवर्नमेंट की स्कीम से उनको इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करूं, राइट? तो नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा उसका। आई समझ में? Yes, sir. देन कम्स टू द इफेक्टिव एंड एफिशिएंट। गवर्नमेंट क्या होना चाहिए जब अपनी गवर्नेंस में, जो एक्चुअली गवर्नेंस का क्या काम है, डिलीवरेंस ऑफ द सर्विसेज। वो जो सर्विसेज होने चाहिए वो कैसे होनी चाहिए? इफेक्टिव एंड एफिशिएंट होना चाहिए, राइट?
जितना effective and efficient होगा, there will be the better quality of the services and then the better outcome of the services, right? Because हमें e-governance और good governance is the next step. अगर आप देखेंगे तो next step में क्या हो रहा है, आप जो schemes हैं, programs हैं, government के implementation है, वो क्या हो गया, वो outcome based हो जाएंगे, right? तो जब भी आप outcome based की बात करेंगे and then outcome based अगर आप effective and efficiency की बात करेंगे तो क्या होगा, वो ज्यादा effectively outcome होगा उनका। जैसे आई को आपने देखा है, जितना कम उतना अच्छा। Governance, good governance should also have the effectiveness and efficiency. Fine. यहाँ तक कि सबको समझ में आया हर टर्म्स का क्या पर्पज है, क्या मीनिंग है, और ये मत समझिए कि सब इंटायरली अलग है। ऑल आर इंटरलिंक्ड बट सम आर मूविंग फ्रॉम द एवर टू द प्रीवियस वन, राइट? यहाँ तक समझ में आया? बताओ सर अगर एग्जाम में ऐसे मतलब इसका की पिलर्स पूछा होगा तो हम ऐसे डायग्राम कर देंगे और सारे कीवर्ड्स को ऐसे एक्सप्लेन करेंगे, या फिर ऐसे ही डायग्राम में ही चलेगा? हाँ, नहीं, डायग्राम बना दीजिए, देन सारे टर्म्स को समराइज वे में एक्सप्लेन कर दीजिए, राइट? मतलब अगर 10 या फिर 15 मार्कर्स का हो और फिर 2 या 3 पार्ट्स दिया हो तो फिर भी इन्हें सबको एक्सप्लेन करना जरूरी होगा, या फिर बस डायग्राम करके बाकी नहीं पार्ट्स नहीं, में? एक्सप्लेन कर दीजिए तो ज्यादा बेटर रहेगा, एक्सप्लेन में थोड़ा ज्यादा सही रहता है, राइट? ओके। देन यू नो विद रिस्पेक्ट टू उड़ीसा गवर्नमेंट की हम देख लेते हैं। उड़ीसा गवर्नमेंट के लिए गुड गवर्नेंस लिए क्या गया है, राइट? बिकॉज अगर वो आ रहा है देन यू कैन आल्सो मेंशन अबाउट द उड़ीसा गवर्नमेंट, राइट? सो यू नो दैट एक earlier there was a 3T program from the Odisha government, right? For the good governance, right? 3T program था पहले, टीम वर्क, ट्रांसपेरेंसी एंड टेक्नोलॉजी, right? But now again it has moved towards the 5T, right? उन्होंने 5T के लिए कर दिया है, that is related to the team work for the effective implementation of the programs, right? Technology, transparency and time and transformation, right? तो ये उन्होंने अब नया चेंज कर लिया है। सब किसी ने पढ़ा इसके बारे में या फिर इसको एक्सप्लेन करूं, राइट? तो ये नए देयर आर द 5 प्लस फॉर द गुड गवर्नेंस, राइट? तो आप इसको थोड़ा लास्ट में आप लिख सकते हैं, फर्स्ट पेज में आप लिख दीजिए वो वाले जो पिलर्स है वो लिख दीजिए, देन आप विद रेस्पेक्ट टू कनेक्ट विद द स्टेट गवर्नमेंट, राइट? तो उसमें वही है, टीम वर्क में क्या है कि आप सभी लोगों का कोऑर्डिनेशन लेके जो भी सिटीजन से ग्रीवांसेस है उनको आप क्या कीजिए, एड्रेस कीजिए, सो दैट जो गवर्नमेंट के वेलफेयर प्रोग्राम्स है वो इफेक्टिवली इंप्लीमेंट हो जाए, राइट? टेक्नोलॉजी से पता ही कि व्हेन यू टेक द एडवांटेज ऑफ टेक्नोलॉजीज देयर विल बी लेस चांसेस ऑफ करप्शन एंड बेटर इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ द गवर्नमेंट प्रोग्राम। ट्रांसपेरेंसी, यू नो ऑलरेडी व्हाई ट्रांसपेरेंसी वेरी मच इंपॉर्टेंट। टाइम इज दैट is if you want to time, then you can say it is the quality of services or effective or efficient delivery of the services. So the lesser the time, the better outcome can be achieved. And transformation, so it is the amalgamation of the transformation, amalgamation of the teamwork, technologies and transparency and timely delivery of the services, right? So the new transformation can be brought out. Just give me 1 minute, I'm coming. ओके, किसी को स्पीड में इशू आ रहा है?
बताइए मुझे। नो सर। स्पीड इज राइट। कहीं पे ग्लिच हो रहा है क्या इंटरनेट में? तो सर मैंने मैसेज किया था सर, मेरे तरफ से ग्लिच हो रहा है थोड़ा सा। और किसी को वॉइस आ रहा है ब्रेक हो रहा है। हाँ सर, हो रहा है। हाँ सर, बीच बीच में ग्लिच हो रहा है। ओके ओके ठीक है, वो 4G या 5G में थोड़ा इश्यूज आ रहा होगा, बट अगर कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस हो रहा है जस्ट लेट मी नो, राइट? सो इट इज अ नेचुरल थिंग। अगर कहीं इश्यूज आ रहा है जस्ट लेट मी नो, वी विल रिपीट दिस थिंग, राइट? सो फील फ्री टू आस्क दोस थिंग्स, राइट? तो ट्रांसफॉर्मेशन में क्या है, जो एग्जिस्टिंग जो इश्यूज है टीम वर्क के हैं आपके, राइट, अलॉन्ग विद टेक्नोलॉजी, ट्रांसपेरेंसी और टाइम डिलीवर सर्विसेज है, उनको क्या करना है आपको और इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करना है। तो ये प्रोग्राम उड़ीसा गवर्नमेंट है फॉर द गुड गवर्नेंस, सो दैट their governance can be made the people centric government, right? There is one more programs of the Odisha government is there. किसी को पता है क्या है? मो सरकार करके एक प्रोग्राम है, राइट? इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे? मो, आई थिंक मो ही करेंगे, राइट? सर मो सरकार। ओके, मो सरकार, आई थिंक इट इज मीन मेरी सरकार, एम आई राइट? यस सर। यस सर। हाँ, मेरी सरकार है वो, राइट? सो इट इज आल्सो द फॉर्म ऑफ द डिजिटल गवर्नेंस। डिजिटल गवर्नेंस में क्या है कि लोग गवर्नमेंट ऑफिसेज में जाते हैं, राइट? Then randomly their feedback will be taken कि how the government officials are actually working, और वो फिर क्या करते हैं कि ये देखते हैं कि जो फीडबैक है that is as per the standard or quality of the government services, और in that also जो CM है उड़ीसा के, they also make 10 calls a day, वो रैंडम किसी को कॉल करेंगे क्योंकि the data is noted down in the government services, तो वो फोन करके पूछेंगे कि how was the services at that particular place, देन वो फीडबैक मैकेनिज्म एक तरीके से अगर आप देखें तो मो सरकार जो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है। क्योंकि मेरी सरकार का मतलब क्या है, इट इज मेरी सरकार नॉट फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड, रादर इट्स फ्रॉम द पीपल साइड। द गवर्नमेंट गवर्नेंस विल बी द पीपल सेंट्रिक, राइट? सो इट इज आल्सो द पार्ट ऑफ द गुड गवर्नेंस। तो 5T initiatives is basically for the government or administrative, and this mechanism is basically to next step for the 5T। तो ये दोनों ही गुड गवर्नेंस के पार्ट है। सो यू हैव टू मेंशन दोस थिंग्स। अगर वो गवर्न सरकार पूछते हैं क्या इनिशिएटिव है या 5T मैकेनिज्म ऑफ द ओडिशा गवर्नमेंट, दे कैन आस्क दिस थिंग, राइट? व्हाट इज द 5T इनिशिएटिव ऑफ द ओडिशा गवर्नमेंट, दे कैन आस्क। वेरी मच चांसेस आर देयर कि अदर 5T और मोर सरकार दे कैन आस्क, राइट? You should know. So in that scenario क्या है, when there is a people participation is there, then it will again build the trust of the people among the government, and it will also promote the e-governance, right? So it is the next step towards the democracy। आई समझ? तो ये हमारा वही चीज है, सेम चीज लिखना है, बट द बेटर यू राइट द बेटर यू गेट द मार्क्स। सो यू मेंशन दिस थिंग 5T एंड मो सरकार, ठीक है? आई समझ में यहाँ तक? तो अब गुड गवर्नेंस का जो भी क्वेश्चंस आएगा, कैन यू सॉल्व दैट क्वेश्चन? ओके, इफ यू वांट रिप्लाई देन आई थिंक दैट माय वॉइस इज डिले, मेरे को नेट का इश्यूज है तो। यस सर। ओके ठीक है, वॉइस अब ठीक है, अभी वॉइस में कोई इशू तो नहीं है अभी? नहीं सर। वेरी गुड। सो व्हाट इज आवर नेक्स्ट टॉपिक, प्लीज टेल मी, कोई बताइए मुझे। सर I know, फिलोसॉफिकल बेसिस ऑफ गवर्नेंस एंड प्रोबिटी। वेरी गुड। सर मुझे तो पता है, कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक सर्विस हो गया था ना? हाँ वो तो हो गया, हाँ। राइट? सो नाउ टॉपिक इज फिलोसॉफिकल मीनिंग बेसिस ऑफ philosophical basis of good governance, गवर्नेंस एंड प्रोबिटी। governance and probity, very good, right? So we will discuss only 3 or 4 people, they are more than enough for us, right? The first is Aristotle, right? So Aristotle classified the government based on government interest, in the sense कि गवर्नमेंट किस तरीके से काम करती है, right? The government can be, first government can be either perverted government, right?
You mention these terms, right? अगर Aristotle से specifically questions आता है, the first government can be the perverted government. In this government will be ruled by few people, right? This government will be run by the few people. कुछ लोग ही होंगे, and they will basically work for the interest of ruling class, right? वो क्या certain group के लोगों के लिए काम करेंगे, especially basically for the ruling class, because उस समय पे kingship होती थी, that is also known as the ruling class, right? क्योंकि उस समय पे democracy नहीं थी, but as the Aristotle is a philosophical person, so he is more emphasizing on the people's well-being. तो उन्होंने कहा गवर्नेंस दो टाइप की हो सकती है, there can be two forms of the governance. First can be the perverted governance. In that governance, few people rule, and they will work for the interest of the ruling class. Second governance will be the legitimate governance, right? Sir, So this legitimate, हाँ जी, sir, please explain one. Your voice is breaking. okay, sorry for it. First government will be the perverted government, right? The first government will be the perverted government, and this government will work in the interest of ruling class. आया समझ में आपको सर? In this form of government, only few people will rule, and they will work in the interest of ruling class. समझ में आया? Yes, sir. Yes or no? Yes, ठीक sir. है. Second is the legitimate government. As you know that legitimate government in the sense the rule based हो, and that government work in interest of people. So this governance will be a form of good governance, right? But remember the good governance जो term है, that is the current democratic term. But if you want to correlate it, then you can say it is a legitimate government, and it is for the betterment or the interest of the general public, right? And then जो state है, that state exist or state work for the sake of good life. तो लोगों की गुड लाइफ के लिए वो वर्क करेगी, एंड इट प्रमोट्स मोरल ऑब्जेक्टिव, जो मोरलिटी है उसको प्रमोट करेगी, गुड लाइफ के लिए काम करेगी, एंड इट विल आल्सो प्रमोट द जस्टिस एंड कॉमन गुड, राइट? क्योंकि आपको पता है जो स्टेट है वही प्रमोट करती है. नो डाउट अर्लियर स्टेट इज रिलेटेड टू द किंग, अभी स्टेट का अलग पर्पस है, but basically he want to say about the king, right? But you have to write the state because आप good governance से compare कर रहे हैं. The state exists and work for the sake of good life, and it promotes moral objective, justice and common good. Common good में क्या होगा? The common good is that good for whole society, जो सारी society के लिए अच्छा हो, right? In this society, the allocation of benefits and burden will be distributed among members, right? Among members, right? तो उस कॉमन गुड में क्या होगा? जो गुड है वो पूरी सोसाइटी के लिए होगा, और जिसमें एलोकेशन ऑफ बेनिफिट्स और बर्डन. बेनिफिट्स क्या है? इफ समवन इज डन समथिंग गुड, then he will be awarded. If something is done bad, then he will be punished, because that is also not good for the society. अगर किसी ने अगर स्टील किया है, चोरी किया है, that is good, not good for the society, but rather than state should work for the common good. तो क्या होगा? The person who are doing or making any mistake, then he will be or she will be punished,
राइट, ये है. So state, then the state will work for common good and happiness of people. Right? And while achieving this thing, good and happiness, it should not be promoted arbitrary or by unorganized system. Right? Arbitrary नहीं होना चाहिए, unorganized नहीं होना चाहिए. Right? Because अगर कोई चीज arbitrary हो रही, unorganized हो गई, then it will be the perverted government. But if something is not arbitrary or something is organized, then this government will be the legitimate government. Right? Right? Then again he says that those who are holding the public offices, right? Those who are holding the public offices, should not act for their benefits, right? Because it is a legitimate government that will work for the common good of the people, and it will promote the justice. In the sense, they should not act for their own benefit, and they should not take advantage of their position to enrich themselves. Right? Rather than they should work for common good and to serve humanity, right? And development of people, right? तो इनका ये पर्पस था, इनके हिसाब से गुड गवर्नेंस ये थी. आई समझ में? सब Sir, चीज एक वही बार है. sir, can you explain this the second form of government quickly? Which one? कौन सा? ये The वाला? legitimate one. Yes, the legitimate one. मतलब थोड़ा heavy concept होगा. Legitimate government ही actual good governance है, right? Aristotle want to say that कि legitimate governance है वही good governance है, because that government will work in the interest of people, and it will work, or it will promote moral justice, moral objective, and common good, right? Right? But because इसका criticism है, but examiner will not ask you criticism, that's why I'm not telling you the criticism. वो फिर वो issues create करेगा, because there was no democracy was there was only king, and king can be the philosopher who have wisdom, virtue of the wisdom, right? तो एक तरीके से good governance तो नहीं है, because it does not promote the equity, right? That is another thing. तो वो आप उसमें मत जाइए. But legitimate government is there that work in the interest of people, right? That promotes the moral objective, justice, and common good. On the other hand, perverted government, उन्हें बताया कि दो फॉर्म ऑफ गवर्नेंस हो सकती है, दो फॉर्म गवर्नमेंट हो सकती है. perverted government, that is rule of few people, and they work in the interest of the ruling class, right? आइए समझ में आपको? Yes, sir. Very good. The next is Gandhi, right? Right. So Gandhi ji propounded the doctrine of Swaraj, right? It is a form of good governance, right? It is known as the self-rule, right? And self-rule is related to two things, right? First is self-rule is the rule of
independent government, right? Because at that time there was a British rule. They want to free themselves from the yoke of British government, right? So firstly, the self-rules related to as a collective level, at a societal level, they were talking about the independence from the British Parliament, right? So they were talking about the sovereignty here, first rule of the independent government. Secondly, they are talking about the individual aspect, right? In the sense, a person should control its emotions and inculcate moral values, right? Right. So अगर अब मैं कहूँ that Gandhi's Swaraj or form of good governance is more tilted toward the ethical form of governance, right? अगर आप गांधी जी की गवर्नेंस की बात करेंगे, it was more tilted towards the ethical governance, because Gandhi said that if people have the right to elect their representatives, right? लोग हैं अपने representative choose करेंगे so that they can frame the policies for their betterment. On the other hand, these people have right to check the abuse of power, right? तो वहां पे जो गुड गवर्नेंस की बात करते हैं वो लोगों के एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं. गवर्नमेंट शुड आल्सो एम्पावर द पीपल. इन केस देयर इज अ मिसयूज ऑफ पावर, देन people can dissent or protest against the government. But you know that government, Gandhiji was promoted the non-violence and satyagraha, right? So government and satyagraha, right? The Gandhiji said that yes, no doubt, if the government is abusing its power, then people has a right to protest against the government, but while following the non-violence and satyagraha, right? So you see that it is also having the moral principles. एक तो कहते हैं कि गुड गवर्नेंस किस बेसिस पे होना चाहिए, मोरल प्रिंसिपल्स पे होनी चाहिए, राइट? गुड गवर्नेंस तो होना चाहिए कि उस एस्पेक्ट में भी हो गया. अदर से आपने क्या कर लिया, इंडिपेंडेंस भी ले ली, एंड पीपल्स आर रिप्रेजेंटिंग देयर पीपल्स फॉर देयर ओन बेनिफिट्स. But ultimately जो state है, that is inferior to the people, right? Because they are only mean and people are the end. So in case there is a abuse of power, then people can protest against the government. But you know that as a being the follower or non-violence and satyagraha, then he says that people can protest against the government for abusing the power, but that protest should be in the form of non-violence and satyagraha, right? तो वो कलेक्टिव लेवल में होगा. इंडिविजुअल लेवल में as we discussed earlier, at individual level he talks about moral regeneration of individual himself. एक इंडिविजुअल के एक moral human being बनने की बात करते हैं. How can be? He can be by self control, self discipline and self purifications, राइट? तो ये गांधी जी का गुड गवर्नेंस था. आए समझ में? तो दो लोगों गवर्नेंस की बात कर रहे हैं, एक इंडिविजुअल लेवल पे, कलेक्टिव लेवल पे बात कर रहे हैं. जनरली जो हम गुड गवर्नेंस की बात कर रहे हैं वो किस पे कर रहे हैं, कलेक्टिव लेवल पे बात कर रहे हैं. बट व्हेन यू गो फॉर द एथिकल गवर्नेंस, देन इट इज इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव लेवल. तो गांधी जी इज मोर टिल्टेड टुवर्ड्स द ethical form of the governance. No doubt he also talking about the good governance, right? तो अगर वो views भी पूछते हैं, then you can mention that then Gandhi was a ahead step from the good governance, and he basically favor the ethical form of the governance, right? तो state के inferior है लोगों से. समझ में आया सभी को? बताइए. Yes, sir. हाँ Yes, sir. ठीक है, fine. Now comes the Kautilya. Kautilya concept of good governance, right? If they want to ask, either they ask from Gandhi or either they ask from Kautilya, right?
Then you know already Kotal was Maurya time, so there was again a king rule. So all the discussion, all the writing will be with respect to the king. Then Kotalya said that the king should ensure a fair, caring, and clean administrations. किंग को कैसे एडमिनिस्ट्रेशन रखना है? फेयर, क्लीन एंड केयरिंग एडमिनिस्ट्रेशन, राइट? देखो क्रिटिसिज्म इसके भी है, पर हमें क्रिटिसिज्म में नहीं जाना है. अगर देयर इज ए किंगशिप देन ए कॉमन पीपल कैन नॉट बिकम ए किंग. तो पावर फ्लो क्या हो रही है? एक वन डायरेक्शनल फ्लो हो रही है. ऑल द विश एंड फैंसी ऑफ द किंग. बट स्टिल अगर ऐसा है फिर भी किंग को कैसा होना चाहिए, राइट? किंग शुड बी ए, और यू कैन से द गवर्नेंस, क्योंकि किंग इज ओनली द गवर्नमेंट, राइट? वही गवर्नमेंट है, किंग ही गवर्नमेंट है. So the king should be a fair, caring, and should have clean administrations. And he said that okay, good governance क्या होती है? Good governance come from the king. Then Kotal said that okay, there will be a good governance only when in the happiness of his subject lies his happiness. In their welfare, his welfare. Whatever please himself, he shall not consider as good, but whatever makes his subject happy, he should consider good. है समझ में? तो उसने कहा कि एक गुड गवर्नेंस कब होगी? जब किंग को ये समझ में आ जाए, द किंग रियलाइज दैट हैप्पीनेस ऑफ हिज सब्जेक्ट इन द सेंस जनरल पब्लिक. तो मैं सब्जेक्ट को उठा के पीपल यूज करूंगा यहाँ पे. तो इन द हैप्पीनेस ऑफ पीपल लाइज हिज, मतलब किंग हैप्पीनेस, कि लोगों की खुशी में ही किंग की खुशी है, राइट? इन देयर वेलफेयर, इन द वेलफेयर ऑफ द पीपल lies the welfare of king, right? Or government, but you should not use government, rather than you should use the word king, because at that time there was no government, there was no democracy, rather than it was a king. Whatever please himself, he shall not consider as good. जो king को अच्छा लग रहा है वो good नहीं है, but whatever brings the happiness for his subject, he should consider good, right? तो उनका कहना है कि जनरल पब्लिक की ही अच्छाई में सारी अच्छाई है, राइट? That in this way Kautilya's good governance is framework for sustainable human development, right? देखिए उस समय पे बेसिक किंगशिप है, बट किंग को भी रेस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई कि योर हैप्पीनेस ऑफ सब्जेक्ट और वेलफेयर ऑफ योर पब्लिक लाइज योर हैप्पीनेस एंड वेलफेयर. और जो आपको अच्छा लग रहा है दैट इज नॉट ए गुड इन इटसेल्फ, rather than what is the good for the general public, that is the good for you. तो एक तरीके से गुड गवर्नेंस ही हो गई है, राइट? इस तरीके से गुड गवर्नेंस की बात करते हैं. Even Kautilya have provided the way for the corruptions, and then he says that कि जिस तरीके से a fish in the water can take the sip of water without knowing to other, in the same way the corruption can be within the administrative machineries, right?
उस समय हो सकता है, बट किंग शुड अडॉप्ट दंड नीति अडॉप्ट करना है उनको. Those who are corruption was considered as one of the biggest crime during the time of the Kautilya, right? Because treasury is very much important for the state. Territory maintain करने के लिए army रखनी थी. So it was. So then he proposed the Dandriti. You just write Dandriti. That is more than enough. You write the Dandriti, and based on the proportion of the crime, that particular person or guilty will be punished. That was his Dandriti. Fine. यहाँ तक समझ में आ गया. Philosophical meanings वाली सारी बातें समझ में आ गई. You can write philosophical meaning गांधी जी का और एरिस्टोटल का, कौटिल्य जी का. लिख सकते हैं आप? Yes or no? Yes, sir. Okay. So now वॉइस सही आ रही है अभी फिलहाल? हाँ बताइए सर, आप. मतलब Yes, once sir. in a while थोड़ा मतलब हो जाता है ग्लिच. अच्छा. तो कोई इम्पोर्टेंट चीज तो मिस हुई क्या? बताइए, वो डिस्कस कर लेंगे फिर से. सर कौटिल्य वाला फर्स्ट डिस्कस कर. कौटिल्य ये कहते हैं कि हैप्पीनेस ऑफ सब्जेक्ट, इन द सेंस हैप्पीनेस ऑफ द पीपल lies the happiness of the king, and welfare of the people lies the welfare of the king. मतलब लोग खुश हैं, उसी में राजा की खुशी है. लोगों का अगर उद्धार हो रहा है, अगर वेलफेयर हो रहा है पीपल का, then only welfare of the king, right? Then again he says that if something is considered good by the king, then it is not good, rather than what is good for the people, that is good for the king. इन द सेंस, अगर मैं एक लाइन में कहूँ कि लोगों की खुशी में ही राजा की खुशी है, ना कि राजा की खुशी में लोगों की खुशी. आया समझ में? यस सर. Yes, sir. राइट. देन दिस गवर्नमेंट कैसी हो गई है? पीपल सेंट्रिक, राइट? People centric. वेरी गुड. तो कंपेयर कर सकते हैं. जस्ट वन मिनट. ओके. सो अब जहां तक किसी को डाउट है, कोई बताइए, तो हम फिर सर नेक्स्ट जो पे मूव लास्ट करते वाला दंड नीति वो वाला थोड़ा. हैं. दंड नीति में वो कहते हैं कि करप्शन इज, अगर वो करप्शन का क्वेश्चन पूछता है, अगर किसी का व्यू पूछते हैं कौटिल्य का, देन यू मेंशन दैट कि अकॉर्डिंग टू द कौटिल्य, corruption is considered one of the biggest crime for the state because it leads to the decay of the treasury. And Kotal proposed that those administrators who are involved in the corruption should be punished proportionally. Okay, sir. Right? वो proportional justice की बात करते हैं यहाँ पे. Right? Now comes to the क्या टॉपिक है नेक्स्ट हमारा? Information sharing And transparency in government. Transparency in government, and the first is right to information, right? सबको ही पता है राइट टू इंफॉर्मेशन क्या है. राइट टू इंफॉर्मेशन इज ए लेजिटिमेट एक्ट, राइट? हाँ जी. सर आपका पेन का थोड़ा सा साइज ज्यादा कर लिया तो समझ ओके. दिख नहीं रहा है आपका लेटर अच्छे से. ओके, आप जूम कर सकते हैं अभी. ठीक है, कम करना है छोटा करना है? अभी ठीक है सर. ओके सर. लेजिटिमेट एक्ट है, आरटी एक्ट है, राइट? और इट इज आल्सो द पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट, यू नो इट, अंडर द आर्टिकल 19. एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, एंड दे सेड दैट राइट टू इंफॉर्मेशन इज अ फंडामेंटल राइट अंडर द आर्टिकल 19. ठीक है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन हर चीज में होते हैं, तो इसमें भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है. Those information, these are very much important for the government to maintain the secrecy. Those information cannot be received by the general public, right? Right? तो right to information क्या कहता है? In the right
to information, different right and duties are mentioned. हम philosophical dimensions में देख रहे हैं, ethical point of view से right and duties are mentioned, right? And then first says that every person has right to request information from public authority, or if I can say from the government, and even private bodies in some cases. यहाँ पे गवर्नमेंट सब्सटेंस शेयर प्रोवाइड करती है, ग्रांट प्रोवाइड करती है, वहां पे भी ले सकते हैं, बट नॉट ऑल प्राइवेट अथॉरिटीज, बट कुछ प्राइवेट अथॉरिटीज है यहाँ से गवर्नमेंट की फंडिंग जाती है, बिकॉज दैट इज नॉट मनी ऑफ द गवर्नमेंट, रादर इट इज द public money, so they are also accountable to provide the information to the general public, right? Second is, now it is the person का right हो गया, right? Every person has a right to request information from the public authority. The next, the act says that it is the duty of government to provide requested informations. Requested information within time framework unless defined exemption apply, right? Thirdly, that एक तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन मांगी, वो आप मांगना राइट है, यहाँ पे ड्यूटी उनको प्रोवाइड करना. इवन द एक्ट सेज that it is the duty of government to proactively disclose information, right? उसमें ये भी प्रोविजन है कि गवर्नमेंट को खुद से भी एक सेक्शन है, I don't want to go for the section, it is either section 4 or 6. It says that the government should proactively disclose the information for the general public interest, right? Right? So you think, what are the advantage of this thing, right? First, it will promote the transparency. It will promote the greater transparency in functioning of public authorities, right? Do you agree with it? Right? Transparency क्या है कि people can ask for the information, or they should themselves proactively disclose the information. Along with transparency, it will also promote the accountability. It will promote the accountability and improve the performance of government. Do you think that if someone can ask the information, government क्या कर रही है, what are their functioning, what their agendas are there, right? How they are doing, where the fund is distributed? In that scenario, if there is a transparency, then performance will also be improved, right? Again, it will lead to the promotion of partnership between citizens and government in decision making process. इससे क्या होगा, जब लोग इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे तो एक तरीके से क्या होगा, पीपल्स पार्टिसिपेशन इन द गवर्नेंस बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा? in the government or governance, it will enhance or not? Yes, it will enhance. So it will also lead to trust building. वो ट्रस्ट बिल्डिंग भी होगा दोनों के बीच में, राइट? तो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस पार्टिसिपेशन
Next, for the board, it also is the trust building among the government and its institutions and its organs. And it will trust building भी हो गया, right? Trust building, and then it will lead to check on corruption in government and its institutions. आपने देखा ही होगा कि RTI is a very good tool to disclose the corruption. Or you know that in RTI, if you file in RTI, then you have right not only to get informations. आप information gather कर सकते हैं in the form of documents or verified documents, right? Along with you can inspect their documents, right? Government documents भी inspect कर सकते हैं आप जाओ RTI फाइल करो and you want to inspect certain documents, he will give you the time and date. आप जाके वहां पे डॉक्यूमेंट भी क्या कर सकते हैं, इंस्पेक्ट कर सकते हैं, राइट? सो देखिए पीपल्स का डेमोक्रेसी में कितना पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, राइट? तो आरटी के समझ में आया कि पीपल्स का पार्टिसिपेशन बढ़ाएगा, इन्फॉर्म्ड सिटीजंस प्रमोट करेगा, क्योंकि if the people know their rights, know this one, they are the more informed or aware citizens, right? So that will also, if people are more informed or aware, then not only enhance the people's participations, but also leads to the affecting or influence the government policies, decision making, right? So it will ensure the future of next generation, right? So participative democracy को promote करेगा. समझ में आ गई ये वाली बात? बताइए. हाँ सर. बताइए, आ गया? तो ये सारे पॉइंट्स आपको मेंशन करने हैं. देयर आर नो डाउट सर्टेन इश्यूज विद द आरटीआई इटसेल्फ. फर्स्ट ये है, इसको लिखना नहीं है, मैं बता देता हूँ जल्दी जल्दी. फर्स्ट इशू इज दैट कि देयर इज अ प्रोविजन, एज आई सेड यू, देयर इज अ डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन बाय देयर ओन सेल्फ. खुद से आप डिस्क्लोज कर दीजिए, बट it is rarely observed that the government officials disclose the information. Secondly, when someone apply for the RTI and the information provided them, it is not in a good quality information, right? वो vague reply करते हैं, so it is not a good quality of information. Thirdly, they sometimes they do not reply the RTI. बहुत pending डली है RTI fee, so they do not reply the RTI. Fourth is that people itself are not aware with respect to the RTI. Yes, so we are all are educated, but we have never applied for the RTI. Fifth is, if someone is applying the RTI and then disclosing the corruption, that they are subject to be harassed. Right? कभी कभी इनको मार देते हैं, कभी harassment करते हैं one or other way. Right? So it is also issues. And one more issue with respect to that even it is also used as a tool to harass the public servant. Right? कई लोगों के घर भी चल रहे हैं इससे RTI एक्टिविस्ट के. They get the information and there is a corruption, then they गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को क्या करेंगे, वो थ्रेट करेंगे कि ये करप्शन हुआ है, और इवन द गवर्नमेंट ऑफिशियल नो दैट इज देयर इज करप्शन, देन यू गिव सम, तो आप कुछ पैसा और दीजिए. तो आरटी एक्टिविस्ट के ये भी फंक्शंस होते हैं, राइट? दीज आर द 5 or 6 इश्यूज विद रिस्पेक्ट टू द आरटीआई. ठीक है, तो आप लिख सकते हैं, राइट? फाइन. Yes sir. Yes or no? Please tell me. Very good. What is the next topic? Citizen charter. Okay, Sir, very good code of point. ethics and Citizen code of charter. conduct. ओके, उसे डिस्कस कर लेंगे. पहले सिटीजन चार्टर कर लेते हैं. इट इज ए बिग, ठीक है. सिटीजन चार्टर बताइए क्या होता है सिटीजन चार्टर, किसी ने पढ़ा है तो? क्या बताइए. It is a document Sir. of commitments, commitments of a organization
regarding what service they are providing. Okay, very good. So it is illegal. No, sir. ओके, किसी ने No, sir. सिटीजन चार्टर देखा है? Yes, sir. कहाँ पे देखा आपने? सर वो पीएससी साइट में. नहीं, साइट तो ठीक है, वहां पे तो कोई एफर्ट नहीं लगता. आपने ऑफिस में देखा कभी? ठीक है, तो अगर आपने नहीं देखा है और साइट्स पे देखा है तो इट इज नॉट लीगल, राइट? कॉमन सेंस से पता चल गया हमें. आरटी आपको मिलेगा मोस्टली यहाँ पे, आरटी से लीगल, राइट? बिकॉज यू नो दैट देयर इज अ आरटी एक्ट 2005, तो ये लीगल हो गया. Citizen chart, basically you know need to understand it is a moral obligation, right? Right. So अगर आप ethical governance की बात करें then you should include citizen charter also. So ethical इसमें governance vision कब और होगा? जब citizen charter हाँ हाँ, वो तो ठीक है, citizen charter में क्या क्या होता है वो ठीक है, अभी इसको भी डिस्कस करते हैं, right? But basically citizen charter is a moral obligation on the institution. Understand? आरटीआई में वो बोलता है कि डिस्क्लोजर, सेल्फ डिस्क्लोजर ऑफ द इंफॉर्मेशन इज ए लीगल, बट इन सिटीजन चार्टर इट इज अ मोरल ऑब्लिगेशन. ये डिफरेंस है बेसिकली, क्योंकि दोनों ही ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहे हैं, राइट? बट वन इज लीगल, इज द मोरल. नेक्स्ट व्हाट द डिफरेंस. अब बताइए आप क्या कह रहे थे? फर्स्टली क्या था उसमें, क्या क्या इंक्लूड होता है इसमें? नहीं, मैं पूछ रहा था इसमें विजन और मिशन स्टेटमेंट इसमें आता है? हाँ विजन एंड आता है. मिशन स्टेटमेंट. सिटीजन चार्टर एक ऐसा होता है, सिटीजन चार्टर एक बढ़िया बोर्ड होता है उनका, and they have certain thing within this information, right? First they having mission and vision. क्योंकि ऑफिसेस में Mission वही and vision लगता है, मतलब लिखा विजन होगा. और मिशन. Yes, they will have mission and vision statement of service provider. Service provider. It is mainly for government institutions, right? PSUs में कोल इंडिया या जो ये भी सर इंस्टीट्यूशन है PSUs या में. फिर जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट, वहाँ पे मिलेगा, राइट? तो मिशन एंड विजन स्टेटमेंट ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड. सेकंड, व्हाट डज इट हैव? It has list of services, right? It has service provided, जो services provided करते हैं along with quality, cost and time, right? कि क्या क्या वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं along with quality, cost and time. Third, if something is there but still someone having the issues and they are not delivered on the time, then they also provide the grievance redressal mechanism. एक feedback mechanism भी होता है. Then again there is expectation from clients. ऐसा थोड़ी है कि सब कुछ वही करते रहेंगे. अगर हम आपको सब दे रहे हैं then clients or the consumers also having the responsibilities that they should also be a member of us and हमारे लिए भी अच्छा member हो आप, right? तो एक सिटीजन चार्टर है, ये इसका मेनली पर्पज है सिटीजन चार्टर का, राइट? सर कैन यू इस एक्सप्लेन द वे लास्ट पॉइंट? क्या योर होना वॉइस चाहिए? इज ब्रेकिंग. Expectation from clients. If someone is providing services to you, quality services to you, is taking your feedback, they want some expectation, they have some expectation, they want some bonus. वो क्या होता है? You be a valuable customer for them. आप उनकी सर्विसेज को यूटिलाइज करो, उनको एनकरेज करो, राइट? उन प्रोडक्ट को परचेज करो, लोगों को भी बताओ कि यस दे आर प्रोवाइडिंग द गुड थिंग्स, उनको भी एक तरीके से बेनिफिट प्रोवाइड करो, राइट? आई समझ में?
सर नहीं सर, फिर से वो वॉइस ब्रेक हो रहा था। सर अभी बहुत ब्रेक हो रहा है। ओके शिव सर, ओके जस्ट अभी ठीक है आवाज, बताइए अभी। नॉट इज फाइन। Yes. हाँ सर। Okay, fine. So expectations from the client in the sense, okay, if someone is doing good for you, he's सर इट इज फ्रॉम क्लाइंट Yeah. और फॉर क्लाइंट? क्या कह रहे हैं आप? सर इट इज एक्सपेक्टेशन फॉर क्लाइंट और फ्रॉम क्लाइंट? No, I'm not getting you. सर आपने जो फोर्थ पॉइंट लिखा है, एक्सपेक्टेशन Uh-huh. फॉर From और from फ्रॉम। client. Fr- ओके, from फ्रॉम। from. It is from client. Expectation from client. Because organization also have the expectation from the client, right? The one who is providing the services to you, they also have certain expectations to you. क्या expectations कर सकती हो कि भी जो service provider है, कि that you purchase their product because they are providing you qualitative products with certain cost and time, within a time limit. Even they are ready to accept your grievances and they are addressing your grievances को भी address कर रहे हैं वो. Then they are expecting from your side that you buy their product, you take the benefit of their services and you contribute for them. कंट्रीब्यूट कैसे कर सकते हैं? आइदर यू प्रमोट देयर प्रोडक्ट, यू परचेज देयर प्रोडक्ट, तो लोगों को बताएं कि अच्छी कंपनी है, राइट? फाइन. सो सर बेसिकली दिस, क्या होता है सर? क्या कह रहे हैं आप? सर इसके यूज क्या होता है? मतलब जैसे आरटीआई की यूज है, हम इंफॉर्मेशन जानेंगे, क्या इसका यूज क्या है? यूज एक मोरल ऑब्लिगेशन है ये, वहां पे फोर्स किया जा रहा है, यहाँ पे खुद से लोग प्रोएक्टिवली आ रहे हैं, तो एक नेक्स्ट स्टेप है गुड गवर्नेंस से. यहाँ पे वो खुद कह रहा है देखो हम ये प्रोवाइड करेंगे, इतने कम टाइम में प्रोवाइड करेंगे, इतनी अच्छी क्वालिटी देंगे, तो एक ऑब्लिगेशन पुट कर रहे हैं ना कि हम चीजें अच्छी अच्छी करेंगे आपके लिए. इससे क्या होगा? लोग प्रोएक्टिव हो रहे हैं, लोग मोर इथिकल हो रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन. तो अच्छी, अगर कोई खुद से, अगर आप बोल रहे हो, खुद से आप कह रहे हो कि मैं इतने कम टाइम में कर दूंगा, अच्छी चीजें कर दूंगा, दैट इज अ गुड थिंग ना. यस। हाँ, तो वैसे हो जाएगा ये. ठीक है, वॉइस इज क्लियर. हाँ सर। ठीक है. सो इट क्या होता है फिर, ये इस तरीके से क्या होगा, एक तरीके से एफिशिएंट हो जाएगा, मोर बेटर वे में सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, राइट? तो ये उसके एडवांटेज हो जाएंगे. बट व्हाट आर द एथिकल इश्यूज विद इन इट? एथिकल इश्यूज क्या आ रहे हैं इसमें, राइट? एथिकल इश्यूज इसमें क्या आ रहे हैं? फर्स्टली क्या हो रहा है, गवर्नमेंट कहता है कि जब आप बनाए या चार्टर बनाए, तो वो जितने भी स्टेक होल्डर्स है उनका पार्टिसिपेशन व्यू ले लीजिए आप, राइट? बट मोस्टली जो चार्टर क्रिएट किए जा रहे हैं, दे आर नॉट टेकिंग टेकिंग व्यूज ऑफ मल्टी स्टेक होल्डर्स. ठीक है, होना कि ये सिटीजन चार्टर बनाते हुए आपको, क्योंकि आप जितने स्टेक होल्डर्स का व्यूज लेंगे, दे विल बी मोर पार्टिसिपेटरी, दैट विल बी मोर पार्टिसिपेटरी, बट व्यूज ऑफ द स्टेक ऑल स्टेक होल्डर्स आर नॉट कंसिडर्ड, दिए नहीं जा रहे हैं. सेकेंडली, जिन्होंने व्यूज ले लिए स्टेक होल्डर्स के, स्टिल ड्यू टू lack of legal obligation, as I said, it is a moral obligation, due to the lack of legal obligations, they are not publishing it, they are not publishing citizen charter publish नहीं कर रहे हैं, right? Thirdly, अगर someone is publishing the citizen charter but they are not following norms, वो norms ही follow नहीं कर रहे. Fourthly, there certain code and conduct is there, but code conducts and code of ethics is not followed by the organization. Right? ये मेजर इश्यूज है इसके सिटीजन चार्टर के. समझ में आया?
हाँ सर। आ गया. Then ARC recommended certain points कि how a citizen charter should be there. आप लिख लीजिए कि firstly it should be the citizen charter should be formed by inculcating the views of multi stakeholders, right? Firstly जब आप फॉर्म कर रहे हैं तो मल्टी स्टेक होल्डर्स के व्यू इनकलकेट कर लीजिए, right? Then only a good charter can be formed, right? Secondly, set standard and norms for each services. क्योंकि स्टैंडर्ड और नॉर्म्स अगर होंगे किसी सर्विसेज के लिए, फॉर ईच सर्विसेज के लिए, फॉर एग्जांपल कोई गैस सिलेंडर्स डिलीवर कर रहा है, काफी एजेंसीज हैं, काफी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अब किसी ने अपना टाइम लिख लिया 3 days, किसी ने लिया 5 days, तो ये स्टैंडर्डाइज नहीं हुआ ना. सो इट इज वेरी मच नेसेसरी कि स्टैंडर्डाइज अगर नॉर्म्स होगा, कोई सेट स्टैंडर्ड्स होंगे इस सर्विसेज के लिए, दैट विल बी बेटर रादर देन सब अपने अपने हिसाब से सिटीजन चार्टर कर ले, राइट? बिकॉज इट इज मोरल ऑब्लिगेशन. सो आप मल्टी स्टेकर्स के व्यूज लीजिए, अलोंग विद देयर शुड बी ए सेट स्टैंडर्ड एंड नॉर्म्स फॉर ईच सर्विसेज. thirdly, जब स्टैंडर्ड एंड नॉर्म्स डेवलप कर ले, then steps should be made to develop the capacities to meet these standards. पता चला कि आपने स्टैंडर्ड, टाइम, क्वालिटी तो मेंशन कर दिया, बट कैपेबिलिटीज नहीं है, कैपेसिटी नहीं है. कैपेसिटी शुड आल्सो बी मेंशन. देन फोर्थ इज मॉनिटर एंड एवेल्युएट. इनको क्या करना है, आपको मॉनिटर करना एंड एवेल्युएट थ्रू इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म. अगर कोई इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म है, देन देयर विल बी मोर ट्रांसपेरेंसी. तो इनको आप कीजिए, उनको मॉनिटर कीजिए और एवेल्युएट कीजिए. देन फिफ्थ इज कंटिन्यूअस. क्या करना है इसमें, इंप्रूवमेंट करना है बेस्ड ऑन फीडबैक रिसीव्ड थ्रू द एवोल्यूशन. राइट? जो भी फीडबैक मिल रहा है मॉनिटर एवोल्यूशन से, उसको आप क्या कर लीजिए, उसको चेंज करते रहिए, राइट? सिक्स्थ, देयर शुड नॉट बी one size fit all मॉडल. बिकॉज हर जगह पे अलग रिक्वायरमेंट है, अलग सर्विसेज है, देन उसके बेसिस पे सिटीजन चार्टर बनाना चाहिए. और फर्स्ट वी हैव डिस्कस ऑल स्टेक होल्डर अप्रोच, राइट? ये समझ में आ गया? यस. फाइन. तो ये सिटीजन चार्टर है आपका बेसिकली. तो समझ में आ गया, एक मॉरल ऑब्लिगेशन है ये. आप राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के अलावा भी एक सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी जनरेट करेगा ये. अगर आप देखोगे, सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी जनरेट कर रहा है, ट्रांसपेरेंसी प्रमोट कर रहा है. वो ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी कहाँ से आ रही है, सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ से आ रही है? वो खुद से आ रही है. पीपल का पार्टिसिपेशन भी कैसे आ रहा है, खुद से हो रहा है. एंड वी एथिक्स वी टॉक्स अबाउट लोग खुद से करें, दैट इज ऑलवेज गुड, राइट? दैट्स व्हाई सर सिटीजन ये चार्टर एक इज वेरी डॉक्यूमेंट है, मतलब एक गवर्नमेंट ऑफिस में ये एक डॉक्यूमेंट की तरह होता है. हाँ, एक डॉक्यूमेंट होता है वो आपको, अगर कई ऑर्गेनाइजेशन होंगे, मैंने बताया ना कि मोस्टली पब्लिश नहीं करते, तो कोई पब्लिश जी करेगा तो सर. इतना बड़ा बोर्ड होता है, उस पर वो लिख लेते हैं कि हमारे मिशन और विजन क्या है, कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, क्या टाइम फ्रेम मकसद है, राइट? एल्स ऑनलाइन मिल जाएगा आपको. क्या कह रहे हैं आप? एक सर SBI बैंक में होता है कि नहीं? किस में होता है? सर SBI बैंक में है कि नहीं सिटीजन चार्टर? अरे सर बताए ना, जो भी गवर्नमेंट है एंड गवर्नमेंट रिलेटेड इंस्टीट्यूशन उनमें होगा सिटीजन चार्टर. तो एसबीआई इज ए पब्लिक सेक्टर बैंक, राइट? तो उसमें होगा. आप एसबीआई में हैं? नहीं सर. अच्छा, तो उनको जाके बोलना आपका सिटीजन चार्टर का है. बोला क्यों, का शुभम सर ने कहा है, तो बोलना आप एथिक्स का. मैं बोल देना, कोई इशू नहीं है. नहीं तो फिर आरटीए फाइल कर देना. आरटीए तो बताइए मैंने, आरटीए फाइल करना भी बताऊं मैं आपको? बता श्योर देता हूँ. सर. ठीक है, सब अच्छे काम करो अभी, ठीक है, उसको बाद में बताएंगे. फाइन. वैसे एपीआई होता है, उसमें आप उसको देख के आ जाना.
₹10 का स्टाम्प लगेगा और जो इन्फॉर्मेशन चाहिए आप उसको लिख के दे देना. He will provide the information. What is next topic? So code of conduct, code of ethics. Code of conduct, code of ethics. आपको क्या लगता है which is bigger? Code of ethics. Very good. Code of ethics is bigger and code of conduct is part of code of ethics, right? Very good. What is the difference? ठीक है. Sir, code of तो conduct में it is codified their duties, their responsibilities. But code of ethics में बस जो moral values है that they are supposed to uphold, and code of conduct में they can be penalized, but code of ethics I don't they cannot be penalized. Okay. Okay, I tell you the 4 points, more than enough, right? First point is that code of ethics is general. एक तो general होता है and wide in nature, right? While code of conduct is specific and narrow in range, right? ये काफी general and wide होता है because it talks basically about the ethical and moral values, right? That's why, right? Then it basically, code of ethics basically talks about governing and decision making. The code of ethics है वो basically related to the decision making. On the other hand, code of conduct is basically related to the actions, right? एक इंडिविजुअल का बिहेवियर कैसा होना चाहिए, एक्शंस कैसा होना चाहिए, राइट? यहाँ पे डिसीजन मेकिंग में रिलेशन है, राइट? थर्ड इज code of ethics is generally publicly disclosed, right? Publicly disclose कर दे generally. बस code of conduct is generally किसको डिस्क्लोज करते हैं, एम्प्लॉयज. डिस्क्लोज जनरली टू द एम्प्लॉय, राइट? कोई कंडक्ट है और रिस्पेक्ट टू द हाउ यू एक्शन, हाउ योर बिहेवियर शुड बी देयर, राइट? ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कैसे है, कैसे you should not shout other colleagues, rather than you have to cooperate each other, right, as a teamwork, right? So it is more related to the work cultures. Code of ethics is related to the more about vision and value of the organization, right? And code of conduct originate from the code of ethics, right? That's why it has wider and general, right? And it is more specific, right? Right? इस तरीके से, right? So it having the rules and it provides for the specific guidelines, right? ये डिफरेंस है दोस्तों. वो जनरल हो गया, स्पेसिफिक हो गया, वो एक ऑर्गेनाइजेशन का हो गया, वो एक इंडिविजुअल का हो गया, एम्प्लॉइज के लिए हो गया, राइट? बिकॉज इन ऑर्गेनाइजेशन काफी बड़ा होता है, एम्प्लॉइज आर पार्ट ऑफ इट, राइट? देन व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ इट? इट मेक एन ऑर्गेनाइजेशन को कैसे करेगा ये? द ऑर्गेनाइजेशन विल बी मोर ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल and citizen friendly, right? It will also promote the good governance, also promote the effectiveness and performance of institution. आवाज आ रही है सबको क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. It will promote more professionalism, right? It will lead to the more professionalism and client responsive, ठीक है? Client और citizen centric ये भी promote करेगा. Then it will foster the improvement in
staff morale. Or no doubt, it will also lead to the improvement of the work culture, right? तो ये एडवांटेज इसके, राइट? अगर क्वेश्चन आएगा सिर्फ इतना ही आएगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कोड ऑफ एथिक्स एंड कोड ऑफ कंडक्ट एंड व्हाट आर इट्स एडवांटेज, अगर पूछेगा तो, राइट? So it is promote the transparency, information, accountability, and better deliverance of services, more professionalism, client centric हो जाएगा उसमें, and more promote the morale of the staffs, right? तो ये एडवांटेज होगा. व्हाट इज द नेक्स्ट टॉपिक? ये तो हो जाएगा. वर्क कल्चर. वर्क कल्चर. वर्क कल्चर तो वेरी इजी है कि हाउ द ऑर्गेनाइजेशन इज बेसिकली वर्किंग, हाउ द एम्प्लॉय शुड बिहेव, और दे शुड वर्क एज अ टीम, राइट? तो दोज आर द गुड क्वालिटीज विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, वो वर्क कल्चर है, राइट? तो वो क्वेश्चन नहीं पूछेगा वर्क कल्चर, डोंट वरी अबाउट इट, राइट? इसे डिस्कस नहीं कर रहे उसको. What is the next क्वालिटी topic? ऑफ सर्विस डिलीवरी. क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी तो वही हो गया जो गुड गवर्नेंस है. इफ देयर इज अ गुड गवर्नेंस, देयर इज अ better accountability and transparency is there, then automatically leads to the effective and efficient delivery of services, and will also lead to the quality of delivery of services, right? The quality of delivery of services is also part of the e-governance, right? तो efficient होना चाहिए सर्विसेज, कैसा होना चाहिए? क्वालिटी efficient होना चाहिए, effective होना चाहिए, कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, और टाइमली होना चाहिए, राइट? जब बताया कि आरटीआई है ही आपके पास, यू हैविंग द गुड गवर्नेंस, you have good work culture, right? And you are following the citizen charter, so no doubt the services will be the quality of delivery of the services, right? That's why they put the last in the last quality of services. Fine. आया समझ में? Yes, sir. Very good. What is the next topic? Utilization of public fund. Utilization of public. Very good. Utilization of public fund, right? और इसके बाद होगा corruption, right? Yes, sir. दोनों देखो इंटरलिंक्ड है ना एक दूसरे से. There is no difference between them. Right? So as I told you earlier, okay, that civil servant have different responsibilities, and he is the one who help in framing the policies and also implement the government policies. And no policies can be delivered or effectively implemented without the money, right? Everything is related to the money, and this money is whose money? किसका पैसा ये? Public. Of course, it is public money. So it is a moral duty or is a legal duty, both है, क्योंकि हम we are talking about the ethics, then it is a moral ethical duty of the public servant that he utilize the public fund, said it is a public fund, for betterment of people while focusing weaker section of society, along with efficient utilization of fund. फंड का भी यूटिलाइजेशन हो, कैसे करना है आपको? एफिशिएंटली यूटिलाइजेशन करना है, राइट? एज अ पब्लिक सर्वेंट he has certain discretionary power, as you know, right? So while using this fund, while using his discretionary power, he should not utilize this fund for his own vested interest or the interest of certain group of people, right? Certain group of people, so that he or she can get benefit either in cash or kind, right? तो इस तरीके से उसको जो यूटिलाइजेशन वो फंड है, दिस शुड बी वर्क इफेक्टिवली, then only transparency and accountability can be maintained within the governance,
and the trust of the people and betterment of the people can be done, then state will be a welfare state, and that governance would be the good governance, right? That's why this topic is under the probity in governance, right? If utilization of fund is carried out, or there is a misallocation of fund inappropriately, then ultimately it will hamper the people's well-being, and it will also lead to the corruption, right? That's why it is said that corruption is not good for good governance, right? So it is very much needed that in order to achieve the good governance, there should not be corruption, right? Now corruption नहीं होना चाहिए. So what do you mean by corruption? What is the corruption? Use समझ of में आई public utilization of resources for private interest, for vested interest. very good. So when a public authority use this power for its vested interest either in the form of cash or kind for himself or relatives or friends that compromise public interest is known as corruption, right? So issues of corruptions क्या है कि misallocation fund है, लोगों के well-being वो नहीं होगा, and there is also leads to the decay of the ethical and moral values within the society, right? Society हो जाएगा, and it is said that a corruption is like a rolling snowball. Rolling snowball देखिए किसी ने? स्नोबॉल बर्फ की जो बॉल Yes. होता है वो, अगर वो आप उसको गिराओगे ना तो बढ़ती चली जाएगी, नीचे गिरती जाएगी, वो बढ़ती चली जाएगी, right? So there is a no limit for the corruption, right? Keep on increasing, and it and basically the reason for corruption is itself the decaying of the social values or ethical values or moral values within the society, right? That's why there is a sanskritization of corruption, right? Sanskritization of corruption within the society. Society itself promote the corruption. Corruption भी दो types के हो जाते हैं basically. First is the one who is on the who is holding the authority, asking for money, money मांग रहे हो, so people don't want to give, but for their work, else the work will be delayed or work will not be done. Then he is asking for the money. That is the one-sided corruption, one form of the corruption. एक side से है. But there is second is collusive corruption. Collusive corruption में क्या होता है? Both are benefited. The one who is holding the position and that who are getting the benefits. For example, tenders में, business में, crony capitalism में, that is also form of the corruption, right? So the next question, if there is related to the corruption, they will ask you what, how the corruption can be checked. Corruption can be checked. बताओ. Reason पता है corruption के सभी को? I think we have already discussed.
those who are making the laws itself are corrupt, because there is a nearly I think more than 35 to 40% politicians are having the criminal backgrounds. There is a misuse of the money within the election itself. There is a nexus of criminals and the politicians, use of muscle power within the elections. Right? Even the elections are raised. Crony capitalism is there. Decay of the moral values within the society is there. Right? So people are also less aware. If some is an honest person, he is also punished, whether it is a government officials or the general public is there, their services are delayed. So these are the basic reasons for the promotion of the corruptions, right? So how the corruption can be checked? The independent and external audit system Very and good. robust vigilance system. Okay, fine. First, you bring the reform from the political side, right? Bringing reform within the political system, right? तो जो issues बताए थे आप उनको rectify कर दीजिए, right? Second is upholding the judicial accountabilities. Those who are making the corruption, they should be punished in the appropriate time frame. स्पीड ट्रायल कर लीजिए उनको, जुडिशियली का सुमोटो केस लेना चाहिए, राइट? थर्ड, व्हाट यू सेड, institutional reforms, right? That you said it is related to institutional reforms, whether it is CVC, whether it is CBI, right? Lokpal is there, Lokayukt is there, right? So they should act in a vigilant and proactive manner. Very good. Proactive manner, right? What else point can be? The public awareness. Very good. Public awareness should be there. Public awareness should be there. Very good. What else? Adopting technological measures to record data and decision-making processes. But Very more good. Adaptation of very good ICT. Very good. For example, DBT has reduced the corruption. E-governance is also reduced the corruption from the grievance redressal mechanism, right? So जैसे मो उड़ीसा करके जो स्कीम है, मो गवर्नमेंट, राइट? उसमें क्या फीडबैक मैकेनिज्म है डिजिटल वे में, तो क्या करेगा, करप्शन को चेक करेगा. वेरी गुड. तो अडॉप्शन ऑफ द टेक्नोलॉजीज. और व्हाट एल्स कैन बी? Sir, rewarding honest officers to give them Very more good. incentives. Very good, right? So awarding and punishing those who are making honest decision and respectively, right? जो अवार्ड के लोग करना है, जो ऑनेस्ट डिसीजन ले रहे हैं, राइट? एंड देन पनिशिंग दोज हु आर promoting the corruption. Very good. What can be the next point? Sir, securing safety for the whistleblowers. Very good point. Providing the safety for providing safety and avoiding, right? Avoiding the whistleblower. Very good. Right. So as you know that in USA, if there is a whistleblower and he raised out a certain good thing, then he is also awarded. Right? He gets certain amount of money. जितना उसने corruption किया हो उसका money मिलता है उनको, right? Not only safety but also should be awarding. Very good. इंडिया में awarding नहीं है, but safety is there, but काफी layman term है, right? Promoting the e-governance. Very good point. What else can be? Sir, RTI. Very good. That is also point within the awareing the citizens about the existing laws. For example, Prevention of Corruption Act, RTI is there. Very good. Lokpal Lokayukt is there. Very good point. So you know that in Prevention of Corruption Act, either taking bribe or giving bribe, both are corruption, considered as a corruption. तो अगर कोई मांग रहा है आपसे, then you have to inform to the respective authority. और अगर आपने ऑफिशियल को दिया, then officials can also give the complaint against you, right? These are the certain points you can categorize the जो different dimensions में discuss की, इस basis पे आप क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं. But more important is that there needs to inculcating the
ethical and moral values within society, right? Society में बहुत जरूरी है, either through dramas, नुक्कड़ नाटक, right? Even in education setup, right? In education setup, right? आपकी education, if you know that recently the ethics is included in the UPSC syllabus, then medical ethics is there, public administration ethics is there. So you know the new medical policy is there, but there is a separate subject for the ethics, right? तो वो एक तरीके से एजुकेशन का पार्ट होना चाहिए उसमें, right? इस वे में आप करप्शन को रोक सकते हैं, राइट? आया समझ में सबको ये वाला टॉपिक? यस सर। वेरी गुड। नेक्स्ट टॉपिक, हो गया? सब लोग लिख देंगे ना? 10 2 पेज तो आराम से लिख सकते हो आप, यू कैन राइट 2 पेजेस इजीली, राइट? हाँ सर। कोई डाउट है बताओ? सब हमने एथिकल डायमेंशंस कवर कर ही लिए, सारे टॉपिक्स को इंटरलिंक कर ही लिया किस तरीके से लिखना है। इज एनी टॉपिक इज लेफ्ट? बताइए सर वो एथिकल इश्यूज इन इंटरनेशनल रिलेशन, फंडिंग एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, वो क्वेश्चन नहीं पूछेंगे एग्जाम में, डोंट वरी। तो हम उसको डिस्कस नहीं करें, आई विल पोस्ट द कंटेंट इटसेल्फ, तो एग्जाम में नहीं पूछेंगे वो क्वेश्चन। सर और एक टॉपिक वो लास्ट टाइम छोटा था, जो लॉज रूल्स रेगुलेशन एंड एज ए गाइड टू वो तो गवर्नेंस। डिस्कस कर लिया ना हमने एथिकल डायलामा के लिए, आई थिंक वी हैव डिस्कस्ड, राइट? बताइए कोई और डिस्कस कर चुके हैं? सर वो थोड़ा ये और वो थोड़ा क्लैरिटी चाहिए था, लॉज रूल्स और रेगुलेशन में एक्चुअल डिफरेंस क्या है, और एक बार अगर एक्सप्लेन कर दें। वो नहीं पूछेगा, लॉ रूल्स एंड रेगुलेशन में डिफरेंस नहीं पूछेगा वो, राइट? वो सिर्फ ये कहना चाह रहा है कि इफ यू आर हैविंग द एथिकल डायलामा, then firstly follow the constitutional provisions and democratic principles, right? Then follow the rules, then regulations, then rules and regulations, then follow, then you should have foundational values of civil services, right? Then you use your conscience as a ethical guidance force, right? Right? वो सिर्फ ये कह रहा है, जब आप एथिकल इश्यूज और एथिकल डायलामा हो तो आपको ये चीजें फॉलो करनी है पैटर्न में, राइट? तो एज सेट के ऐसा नहीं है कि आप लॉ रूल्स तक लिमिटेड कर रहे हैं आपको, बट ऐसा नहीं है कि आप कंपेशन ही नहीं आप में, देन योर एथिकल डायलामा कैन नॉट बी शॉर्टेड आउट। बट ऐसा भी नहीं है कि यू आर ओनली फोकसिंग ऑन दिस थिंग, फाउंडेशन वैल्यूज, you are having the transparency and accountabilities, and along with you are having the compassion, but you are not following the laws and rules and regulations, then it is also not a good thing. तो जब एथिकल डायलेमा हो तो यू हैव टू फॉलो दिस पैटर्न, कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज फॉलो करो, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स फॉलो करो, रूल्स रेगुलेशंस क्या है, व्हेन देयर इज अ चाइल्ड लेबर, राइट? So you have to mention your case study that the person who is indulged in the child labor, then he should be punished. I will file the charges against him if you're IPS, right? Under the Child Labor Act, right? Prevention of the Child Labor Act, right? So you should mention it. That as a public administrator, you should also aware about the laws, right? उस एस्पेक्ट में लॉ की बात कर रहा है, वो डिफरेंस नहीं पूछेगा। एज लॉ इज मेड बाय द पार्लियामेंट, अगर मैं बताऊं तो आपको, लॉज है जो पार्लियामेंट्रियन फॉर्म करते हैं, जो लेजिस्लेचर का पार्ट है, when they delegated the power, delegate the power to executives, right? That is known as the rules, and then other part is the regulations, right? ये डिफरेंस है, ऐसा कुछ डिफरेंस है नहीं, इट इज बेसिकली डेलीगेशन ऑफ पावर। लॉज एक ब्रॉडर टर्म होता है, रूल्स एंड रेगुलेशन स्पेसिफिक टर्म्स हो जाते हैं, बट एग्जाम विल नॉट आस्क विद रिस्पेक्ट टू द एथिक्स, राइट? वो पूछेंगे नहीं, right? But these are the things that you have to know when you are ethical dilemma, how to solve ethical dilemma. That's why जो आप पूछ रहे हैं वो ethical dilemma के टॉपिक में होगा, right? Fine. वो solution एक तरीके से ethical dilemma का। Any more doubt from your side? Please tell me. कोई टॉपिक रह गया बताइए। Okay. I'll tell you one topic is left, that is known as the corporate governance. है सिलेबस में हमारे में? हाँ सर। सर आपने बोला ना इससे क्वेश्चन नहीं आएगा करके। कॉर्पोरेट गवर्नेंस से थोड़ी कहा मैंने इंटरनेशनल वाले बताया था। अच्छा नहीं, मैं ये भी इंटरनेशनल पूछा रिलेशन एंड फंडिंग, राइट?
तो व्हाट इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस, बताइए। बताइए क्या कॉर्पोरेट गवर्नेंस एज पर यू। So the So the principles are adopted by a organization to a private organization to run its business. Okay, then why corporate governance is important? So the corporate possesses numerous employees in it culture or culture. So governance is also necessary for their safety and security. Very good. What else? So to satisfy the needs of every stakeholders. Okay, so who are the stakeholder in corporate governance? So the shareholders, the local community, the Shareholders, then local community, employees, employees, board of directors and board of management, right? And employees and local community. customers. Company is working for the customers, right? Consumers, then general public. Am I right? Yes, sir. How general public is engaged in it, corporate governance? So suppose the industry is releasing non-treated water, so it can pollute the river and Okay. the water resource. General- So in that Okay. sense, that can have Okay, impact. and externalities, very good. Negative externalities there, very good. Then, what if they are not releasing any water there? Sir, general on- public. The general public is a stakeholder because the ultimate product of the corporate is going to go to the general public. They are the consumers. That is the consumers, right? That is the 4 point. They are making a product, and the product is utilized by the consumers. That is fine. Why Sir, the general public? unsustainable use of resources. Okay, because there is always resources, right? And who has the rights over the resources? General public, right? Even if they are not producing any externalities, still the resources are utilized by the companies because they are making the profit. So these are actually resources of the general public. So then corporate should also have the consideration of the general public. No doubt stakeholders are either it is a major or minor. No doubt corporate are good for the economic well-being, economic development. But along with getting the benefits, they are also having the responsibilities towards the minor stakeholders. For example, for us like who are investing through the shares with a minor amount, the major knows about the policies of the corporate. So they are basically benefited. But minor stakeholders does not have much to share, much information. So their interest should also be protected. That's why you have independent directors. You know that under the Companies Act, it is a mandatory to have independent directors, so that the interest of the minor stakeholders are protected. That's why along with the employees are also getting the salaries and they are giving their valuable life and time, right? So their interest would also be protected. Even the board of director and board of management, the board of director, they are having the independent directors is there, and board of management who are having the majority of the share, right? And even they are doing the day-to-day activities, so their interest would also be protected. Then there is a customers who are getting the receiving the products. If there someone is consuming, then the product should be a qualitative. Even the quality of product should be pure and time framework should be there, and their money is there, consuming money is there. So their interest would also be protected. Ultimately, the general public resources are being used by the corporate or institutions. Even in the next case is there, as you said, externalities there, negative externalities there, and they are making the polluter. Then they are subject to the punished
or that's why you use the term polluter pay principle, right? So if a corporate house is there, if he's following the corporate governance, or who is taking care of all the stockholders, do you think that his business will be prosper? Yes or no? Yes, sir. So through these corporate responsibilities, so actually it is a responsibility, right? It is a corporate responsibility towards society, not only leads to profit for the organization, corporate organization, but also leads to the sustainabilities, right? क्योंकि लोगों का ट्रस्ट भी तो बिल्ड होगा उसमें, जनरल पब्लिक का भी ट्रस्ट बिल्ड होगा, तो लोग और परचेस करेंगे, तो जो ऑर्गेनाइजेशन की सस्टेनेबिलिटी है वो भी तो इम्प्रूवमेंट होगी, राइट? राइट सर, बताइए. Yes, That's sir. why it is very much important. The principles of corporate governance बता देता हूँ. Principle of corporate governance क्या है? First is sustainable. जो भी स्टेक होल्डर उनका अच्छा करना है हमें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स, राइट? So their due consideration is taken care. Third is effective management plus distribution of wealth. ऐसा नहीं है कि जो स्टेक होल्डर है, मेजर स्टॉक होल्डर्स है, वही सारा पैसा लेके जा रहे हैं. Rather than it should also be distributed among the employee also, right? Third, discharge or perform their social responsibilities. It is social responsibility if they are making the pollution or they are utilizing resources. There's certain amount of money they should contribute to the society. As you know that as per the Companies Act, that 2% of their profit in the last 3 years they have to invest, right? Those are there are certain limit is there. I think 2000 turnover related with, तो वो आप देख लेना 200 करोड़ है कुछ में and making profit 2 करोड़ और 20 करोड़, तो वो एक numbers है, you can check the numbers. तो अगर उतना वो last 3 years में है, then the 2% of that they have to invest for the people. या तो गवर्नमेंट को दे दें या फिर किसी एनजीओ को हायर कर ले, वो एनजीओ के थ्रू वो डेवलपमेंट एक्टिविटीज कैरी आउट करें, राइट? Discharge perform their social responsibilities, then compliance with जो भी कंपनीज एक्ट में compliance है, laws है, they should comply with laws in letter and spirit. उसको अच्छे से फॉलो करें, उसको letter and spirit में, and then follow the uphold the ethical standards, right? So that should have the right. So these are the basic principles for the corporate governance. So So in case for if right, क्या कह रहे हैं आप? सर Fourth 4 one नंबर थोड़ा पे repeat कर कर लीजिए. Fourth, they should complies with laws in letter and spirit. Complies. Right? They should comply with laws in letter and spirit. Right? Fine. So what are the advantage of corporate governance? ये तो principles हो गए. Advantage क्या होगा मैं बता देता हूँ. First, it will bring the public confidence. Yes. Public confidence in institutions. Right? So उससे क्या होगा? उसका profit होगा, right? Along with it will also bring the professionalism. Along with it will promote the work culture. Right?
Along with it will also consider the social and environment accountabilities. Right. Then it will also protect the customer rights and privacy. So trust of people will also be the strength. So ultimately, it will consider all the benefits for all the stakeholders that will earn the branding for the institutions, corporate institutions. That will result to the profit and sustainabilities for the organization, corporate organization. Organization means corporate organization. Because earlier we were discussing about the public, but now we are talking about the private or certain public institutions, right? Corporate की बात कर रहे हैं, right? So in this scenario, जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है वो अल्टीमेटली सोसाइटी के लिए और पीपल के लिए बेनिफिट है, कस्टमर का भी ध्यान रखता है, सारे मल्टी स्टेक होल्डर्स का ध्यान रखते हैं, बिकॉज यू नो दैट there is a CSR is there, corporate social responsibilities. So why there is a corporate social responsibility, you already know. Then it is said by the government in corporate social responsibility, either you develop the skill of people, तो skill development कर सकते हैं उस अमाउंट से आप, either you plant the tree, तो इको फ्रेंडली डेवलपमेंट कर सकते हैं आप, राइट. अलोंग विथ एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन की बात कर सकते हैं आप. अलोंग विथ you should uphold the triple bottom line sustainability. Through the CSR, the corporate house should uphold the triple bottom line sustainabilities, right? So if examiner asks you, define the triple bottom line sustainability with respect to the corporate governance. So in triple bottom line sustainabilities, you take care of three things, 3P. First P is related to the planet, second is profit, third is related to the people, right? So in triple bottom line approach, you can correlate it with the sustainable development, right? But यहाँ पे sustainable development किसका हो गया? Organization का, because if you're talking about the environment, planet, then you're talking about the environment, so that you will make the less pollution, you will utilize the resources in effective and efficient way. Then profit will not be limited to the major stakeholder, rather than it will be distributed while considering the minor employee. तो यहाँ पे क्या होगा? Equitable distribution of wealth. Then people in the society at large. So there is social skill development, education development. Right? There should also be the considered. The public यहाँ पे होगी कौन? Society, right? Profit is related to the employee, managing board of directors is there, consumers is there, and penalty is the earth itself, right? Right. Second, they talks about the corporate governance should also uphold ESG framework, right? अगर वो अलग-अलग terms use करते हैं ना, you can write it ESG frameworks. ESG again is related to the environment. So they should, corporate house should consider the biodiversity, water efficiency, energy efficiency, carbon intensities, environmental management, solid waste management. And S part is social. Social is related to the corporate should give the equal opportunity to all the people. Freedom of association, healthy and safety, human right considerations, product responsibility, not the promoting the child labors, right? And then G is the governance part. Then governance within the organization should be the ethical governance, board independence, so independent directors होने चाहिए उसमें, audit होना चाहिए, third party audit होगा, right? और shareholder democracies, right? ये यहाँ आपके terms हो जाएंगे, right? तो corporate governance पे आप लिख देंगे कि किस तरीके से corporate as government not only benefiting the consumer society as a large, but also helping the corporate house itself in profit making, right? तो ऐसा नहीं कि वो केवल corporate governance केवल लोगों की benefit कर रही है society को, rather than they are also benefiting the company because they help in brand building. It is building the trust of the people in the corporate house.
राइट? तो वहां पे परचेज ज्यादा करेंगे, तो परचेज ज्यादा प्रॉफिट करेंगे। दैट्स व्हाई इफ यू सी दैट आईटीसी की अगर नोटबुक देखेंगे आप, तो वहां पे आपको पीछे मिलेगा कि फॉर दिस पर्टिकुलर बुक वी आर प्लांटिंग 1 ट्री, ऐसा आपको मिल जाएगा। इवन रीबॉक और एडिडास प्रमोट दैट वी आर प्रोमोटिंग द रिसाइकलिंग। सेम एज टाटा के अगर आप कुछ एरियाज में जाएंगे तो आप देखेंगे कि वो प्लांट ड्राइव कर रहे हैं, वहाँ प्लांटेशन कर रहे हैं, कुछ स्केलिंग कर रहे हैं। महिंद्रा है जो फीमेल को ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात करते हैं। अलॉन्ग विथ दे आल्सो नन्नी कली करके एक प्रोग्राम है उनका, राइट? तो वहां पे वो जो फीमेल है उनको वो स्किल डेवलपमेंट करते हैं, दे आल्सो प्रोवाइड द एम्प्लॉयमेंट। तो ये काम होते हैं उनके, राइट? जैसे टाटा का एक प्रोग्राम है, टाटा यूथ एम्पावरमेंट प्रोग्राम। तो ये स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम से यूथ का, तो यहाँ पे जो रूरल यूथ है उनको वो क्या करते हैं, स्किल प्रोवाइड करते हैं। एक वंसुधरा करके प्रोग्राम है, तो टाटा मोटर्स है, उन्होंने क्या किया है, यहाँ पे सैम्पलिंग किया, प्लांटेशन किया वहाँ पे, राइट? तो इस तरीके के ये प्रोग्राम रन किए जाते हैं कॉर्पोरेट हाउस को। समझ में आया सबको? राइट? तो बेसिकली सीएसआर इज प्रमोटिंग द polluter पे प्रिंसिपल और पे बैक प्रिंसिपल, तो it will benefiting all the stakeholders. Fine, I think we have discussed all the segment of the 2 topics, very much lengthy topic, right? अब अगर किसी का कोई डाउट है, just let me know so we can